You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. You used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be gone.
so distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be Hello guys, good evening everyone. I hope you guys can hear me. कैसे हो सब लोग? Welcome. Okay, let's test the sound first. आवाज आ रहा है सबको guys? आवाज आ रहा है? You guys can hear me? Okay, chalo. Guys, welcome to the second season of Role Playing Podcast with your favorite host, Tao Vaspuchi. थोड़ा ज्यादा टाइम लगा पर 2 साल के बाद वी आर हैविंग द पॉडकास्ट गाइस. एवरी ईयर करना था एक्चुअली. एवरी 3-6 मंथ्स किया तो बहुत अच्छा होता है कम्युनिटी के लिए, पर वी आर डूइंग इट आफ्टर 3 years. एंड ऑल्सो लॉट ऑफ वाटर हैज बीन फ्लोन इन दिस लास्ट 2 years इन आरपी कम्युनिटी. बहुत लोग नए आए हैं, बहुत लोग पुराने और मेच्योर्ड होके अच्छे हुए रोल प्लेइंग में, पर अभी तक वही कम्युनिटी इज ग्रोइंग टुगेदर. जो लास्ट 2 साल पहले हम लोग ने पॉडकास्ट किया था उसमें से बहुत बहुत लोग अभी भी रोल प्लेइंग खेल रहे हैं और बहुत अच्छे भी आगे पहुंच चुके हैं. बट प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी स्टिल रिमेन्स द सेम गाइस. वही है प्रॉब्लम्स, अभी तक वही चल रहा है, पर उसमें से थोड़े थोड़े चीजें चेंज हो चुके हैं. मेच्योरिटी रोल प्लेइंग में थोड़ा मोर एफर्ट्स आ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू सर्वर मैकेनिक्स, सर्वर्स भी अपडेट हो चुके हैं एंड दे गॉट more better mechanics for people to explore more better role playing stories. So it's nice to see you guys who are here present. अब बहुत लोग पुराने लोग इधर के. I'm sorry guys, give me a second. Yes, as per what I was saying is बहुत लोग इधर पुराने लोग होंगे, बहुत पुराने लोग होंगे जो लास्ट पॉडकास्ट के लिए भी प्रेजेंट है 2 साल पहले, और अभी बहुत नए लोग इधर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे पॉडकास्ट को. सो नॉर्मली मेरे को बताना है आप लोगों को हाउ वी डू आवर पॉडकास्ट. आवर रोल प्लेइंग पॉडकास्ट आर सिंपल गाइस. हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं हु आर रिलेटेड इन मैनेजिंग रोल प्लेइंग सर्वर्स, हु आर रिलेटेड इन कंटेंट क्रिएशन ऑफ रोल प्लेइंग सर्वर्स. वी ऑल्सो इनवाइट द अपकमिंग पीपल, जो नए लोग आए हैं, जो अपना एक नया स्टोरी बना रहे हैं रोल प्लेइंग के कम्युनिटी में, जो ये रीजन के, हम उनको भी इनवाइट करते हैं सो दैट दे कैन टेल अबाउट दिस. सो दिस सीजन वी विल हैव 4 episodes. That is, today is the first one, tomorrow will be the second, Friday ko third, and no sorry, Saturday ko third and Sunday ko fourth. If any of in between somebody we cannot have any of one podcast, then we will postpone it to the next week. But otherwise this season also is a rocking season.
Mostly, most of the role players are from Prodigy India community. Some must be playing, some are taken break, whatever it is, but they're all part of Indian Prodigy India community. So it will be a good season, guys, this year. Some names will be were not from the first season, so बहुत नए लोग होंगे, पर पुराने प्लेयर्स ही होंगे, पर उनको might be पहले सीजन में मौका नहीं था, पर इस सीजन में वो लोग होंगे, वो लोग अपना they'll give their inside possibly ideas or secrets or what they have to tell about role playing. So today we are starting with the first episode, which is with the Prodigy India staff and more production staff. Both this staff together are actually managing, operating, and handling the Prodigy India server and more production streamers and also RPCs. Also, they handle BGN server, that is the Battle Street Nexus server, and other things around. They also plan stories and create events inside the server. So it's a full packed team who handles everything of Prodigy India role playing ecosystem. So I will welcome all of them. I will call all of them one by one. Everybody will be in the channel. So you guys should listen to these people. Very important. आज मेरे हिसाब से आज ज्यादा लोग होना होता है देखने के लिए, क्योंकि अगर लोग जो क्राउड देखो क्या होता है जानता है, ये जो चैट होता है ना, वो जैसे आप लोग, वो दूसरे लोग जो दूसरे आरपी प्लेयर्स को देखते हैं, उनको बहुत चीजें समझती नहीं कैसे होता है, उनके एक ही वे देखते हैं वो लोग, बट अगर वो लोग सुनते थे फ्रॉम दिस पीपल हु वर्क बिहाइंड बैक कर्टन्स, तो सबको पता चलता था, चलेगा कि how things really work and how what you all are watching is the effort of the people who are working behind curtains. They are the ones who actually initiate things and rotate the things for you all to actually get the best content and entertainment from your creators. So let's welcome them, guys. Let's welcome them. Let's welcome all of them. Ming, hello. Ming, मी उधर गया क्या? ऊपर रहता हूँ। हाँ वो people should not move. When I'm moving, they should. आवाज आ रहा है Ming? Everything is proper. Yes, sir. Yeah, don't shift anyone here when I'm pulling anyone. Somebody pull somebody back. So, Yes, guys, welcome to the podcast, all of y'all, the Prodigy India staff, management, and the more production staff and management. It's nice to see y'all today in a podcast where the community members will be listening to you and also might be asking some questions which possibly will be very fun and good for you all. You all can tell about yourself, what you all do, how things go. You all have today is your day. You all can talk about your efforts, what you all put for the server. You all can talk about how players respect on the basis of what things you all do for them. How much sad you all become because the players which you all work for create issues and only think about themselves and all those things what you all feel. So welcome all of you all. Welcome to the podcast. It's the season 2 of role playing podcast. It's nice to see you all, guys. So from you all can start introducing yourself towards the people from top. Aditya, आप start करो, ऊपर से नीचे सब लोग अपना introduction दे दो and बताओ आप क्या करते हो. Introduction के टाइम बताओ आप क्या करते हो सर्वर के लिए, आप कौन से साइड पे काम करते हो और क्या क्या आपका ड्यूटीज होते हैं. Aditya, will start with you. Also, you can tell about the role playing, what you'll do inside the server also. Aditya, we can start with you. yes.
मैं गाइस मेरा रियल नेम आदित्य चौधरी है। आरपी में डॉक्टर बेनन का कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ। एज एडमिन मैं ईएमएस साइट को और बग रिपोर्ट्स को देखता हूँ और साथ में सिटी में लोगों को हेल्प करता हूँ। Aditya, you need to tell yourself. Do you understand how you introduce as a staff? आपको बताना है आप स्टाफ का आपका ड्यूटी क्या है, कौन से साइड पे आप काम पे, मोर प्रोडक्शन में, इस पे Yes. सिटी में आप लोगों को कैसे आरपी देते हैं, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दो 5 मिनट का. Okay. जी दाओ। Everyone, guys, everybody give at least minimum 5 minutes introduction to yourself. It's not a just yeah. Please start, Aditya. बेसिकली मैं प्रोडजी साइट पे हूँ। मेनली काम मेरा ईएमएस का होता है। ईएमएस एंड बग रिपोर्ट्स का रहता है। जो भी बग आपके इश्यूज आते हैं सर्वर के, उनको मैं आपको रिजॉल्व करता हूँ, उनको रिजॉल्व में आपको हेल्प करता हूँ। सिटी में ईएमएस की जो भी आप ईएमएस के जो भी आरपी होता है, फ्यूचर आपको कुछ आरपी क्रिएट करना है इन ईएमएस रिगार्डिंग, आपको कुछ यूनिक मेडिकल आरपी करना है, एनीथिंग लाइक दैट, उसमें आपको हेल्प करता हूँ। और No problem, Azim. Sorry, Aditya. Azim, you can Yes, continue. हेलो एवरीवन, अजीम शेख है मेरा नाम। और मैं आरपी ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट बैकएंड में मैं प्रोडिजी इंडिया स्टाफ टीम में हूँ एज एडमिन। और मैं बैन हंट के साथ बग रिपोर्ट्स ही देखता हूँ। अगर आपको कोई बग है जो आप रिपोर्ट ओपन करते हो, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। और आयरली जो इन सिटी अगर आपको कभी कोई वॉइड में चले गए तो वो भी मॉडरेट करता हूँ। अगर आप वॉइड में चले गए तो उसके लिए भी मैं हेल्प करता हूँ। और एज अ बैन के साथ ही मैं ईएमएस डिपार्टमेंट में हूँ, जो मैं कभी कभी मतलब रेगुलर आरपी नहीं करता हूँ, बस कभी कभी करता हूँ। लेकिन जो मेरा मेन काम है वो है बग रिपोर्ट देख करना, आपको जो भी बग की प्रॉब्लम्स हो रही है वो सॉल्व करके देना। और इन सिटी मॉडरेट करना। अगर आपको इन सिटी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप वॉइड में चले गए या कोई ग्लिच है जो आपको क्विक सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मैं हेल्प करता हूँ। थैंक यू। Thank you, Azim. BRM, Hello everyone, please. I am BRM. I play as Luke West in server as a chief, and I mainly manage tickets and see overall like progress of the server along with Bebo and Jungle. And mainly my part is to manage the PD along with my team जो मतलब बहुत supportive देती है बहुत server में मतलब server में पूरा time. BRM, 1 minute. And Huh? They are saying the voice is low of you guys. Anyway, anyone can increase the voice of the output. Ming, थोड़ा output increase करो. Yeah, you can continue, BRM. yeah, that's it. Yeah. Datta. Hi Tao, good evening. Hi Good everyone, evening. good evening. This is me Datta. Most of you know me by my name Datta, but my full name is Shobit Datta. At the initial days when we started Prodigy, I had a lot of time क्योंकि मैं उस टाइम मेरे पास जॉब का बहुत सॉलिड सीन था, बट बीच में मेरी अभी रिसेंट में नई जॉब चेंज हुई है, जिसके वजह से मेरे को पुणे रिलोकेट होना पड़ा था। उसके बाद मेरी टाइम की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, बट उस टाइम में जितना भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं इन आरपी यूजुअली आई एम वॉचिंग द डीओजे डिपार्टमेंट, जिसमें जो भी डीओजे की क्वेरीज एंड इस टाइप की चीज़ें हैं, आई बी लुकिंग इनटू देम। अलॉन्ग साइड जो भी नए लोग डीओजे में इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की चीज़ें, वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा फ्रॉम दी एडमिनिस्ट्रेशन साइड, दैट इज़ टिकट हैंडलिंग, इस टाइप की चीज़ें मैं करता हूँ, एंड आई लुक इनटू द प्लेयर रिपोर्ट थिंग्स। तो वॉट एवर डिस्क्रिपेंसीज आई हैव, ये सारी चीज़ें होती हैं बेस्ड अपॉन माई पास्ट एक्सपीरियंस। आई यूजुअली टेक एक्शंस एंड मैं अपना वर्डिक्ट उस हिसाब से देता हूँ। रेस्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वी आर पार्ट ऑफ द टीम। तो हम लोग सारे टीम मतलब कि बेसिकली जो भी किसी को इश्यूज हो गए या कोई कंसल्टेशन हो गए, तो दोज आर द टाइप ऑफ थिंग्स विच आई वर्क अराउंड एंड आई हेल्प द टीम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड था। Thank you, Datta. Thank you for your feedbacks and your explanation of your job into the more production and Prodigy Thanks, India. Next is Eddie. You can continue. Hello. Hello, everyone. I'm Eddie. Most of you know me in RP through Crash. Yeah, know me by that name. So I think I've been a part of the Prodigy India staff team for more than like 6 months now at this point, and it's been great.
from the admin side of things, I mostly handle the racing scene, the racing crews. I also handle bug reports, play reports, and I also like to help out in events. And I also host a lot of racing events for the server and all the races in playing in Prodigy India. So in RP, you'll find most of the time racing as a part of the server, and it's been great being a part of the staff here. I get to learn new things and dealing with people all the time. So yeah, thank you. Thank you, Eddie. Frosty, you can go ahead. I think Frosty, you have a lot to tell. Thanks, Tao. Good evening, all. So I have been part of the RP scene since like last 9 years almost, and I know Tao personally since like last 5 years. We have been working together in different projects, and I think this Prodigy is like kind of running on my 5th year now. I basically handle the whole staff team, and mainly my focus lies on the in-RP mechanics, in-RP GTA, whatever the mechanics the server has provided. My job is to find it out and deliver it to you guys so that you guys understands what to do, what not to do, where are the exploits, and yeah, kind of I've tried to find more exploits, what people can do, people can their brains capable of doing, and try to report it, whatever, mainly. I also work as a bridge between the main developers, Prodigy main developers, and our India team, so that any kind of issues or any kind of urgent requirement that needs to be fixed or patched, it goes through me and others. Nakul is also there, one of them. Apart from it, I role play. I used to role play only as a judge, as a civilian character mostly, but in Prodigy, I started kind of my crim journey. Let's see how it goes. And yeah, that's all from my side, I guess. Well, the journey is really difficult, Frosty. The problem is you might want to do a good RP journey, but the community, the players normally, every minus of theirs, every problem of theirs, they try to push on someone else, and they will be looking at you and always blaming on you that this guy knows everything, so he must be doing everything before we know anything. This doubt will always then be in their mind, but that only will prove that your actions will prove to them that how much eventually how much we are correct and how much they are wrong in thinking of that. That's how it works. But yeah, thank you, Frosty. Jungle, you can continue. हाय गाइस, मेरा नाम जंगल गेमिंग एज ए बोलते हो एलियस पे, एंड माय प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड ड्रॉग स्मिथ. यूजुअली पीडी साइड में मेरा कैरेक्टर एज अ ऑन स्ट्रीम्स देखते हो, बट ऑन द स्टाफ एंड मेरा काम बेसिकली जितने भी स्टाफ टीम्स है जो प्रोडिजी इंडिया साइड है उनको ओवरलुक करना, एंड फ्रॉस्टी के साथ मिलके एंड बेबो के साथ असिस्टेंस के साथ we proceed with that. I handle the ticketing team. I help in the PD stuff, DOC stuff, and gang की जो चीज़ें हैं, we usually overlook them, try to sort it out जितना जल्दी हो सके, and you guys can be catered as fast as possible. And yeah, that's it. And मेरे को जो basically assistance थोड़ा बहुत मैं more production side पे भी करता हूँ whenever it's needed to Bebo and other team members as well. Thank you, Jungle. Actually, guys, I think most of the community knows, Jungle, that you are a very hardworking person. You did putting a lot of time and effort into this server and has done lots according to what you can achieve for this server. And it's Bebo also. Both of you all have done too. Given a lot of time, lot of efforts. So appreciated. I hope this community understands this. कि वो एक ऑलराउंडर के जैसा जॉब करता है जंगल. वो स्ट्रीम भी करता है, एंटरटेनमेंट भी देता है, बाद में पूरे टिकट्स को भी बैठ के देखता है, देन वीसी में भी बुला के बात करता है. डब्ल्यू it's like a very hectic job he's holding right now. I don't know. I think your hair will turn into white very early. So that will be the gift which you will get from all this hard work, Jungle. So thank you very much. Lemonade, you can go ahead. Yes, though. So basically, my name is Lemonade and मैं RP like 5 years से follow कर रहा हूँ. So basically, I used to watch दत्ता जी from Legacy and उसके बाद फिर ताऊ को देखना शुरू किया न्यू पिक्सल में. उसके बाद फिर मुझे जब प्रोडिजी आया तो स्टाफ की एप्लीकेशंस खुली एंड आई फाउंड अपॉर्चुनिटी. सो मैंने अप्लाई किया एंड होप लकीली लाइक आई गॉट इन एंड
currently as a helper and assisting Mariam ji in business Discord. Thank you, Lemonade. I think lot of community members will know you. Why? Because you are the guys who are initially helping them so much, where most of them act sometimes like fools, but it's basically they require that help because of the server connection issues, where 85% of the player base always faces these issues. And you are the guys who are like a firefighters who are helping throughout. What I have noticed, and I appreciate Ming and you guys, everyone, that first time in our any of our projects we have a, you can say, almost 24 hours support on the Discord. Anytime people are asking any question, you all are there ready to help them, calling them to VCs and trying to solve, even if it is a ridiculous question, you all are trying to solve it in a better way. And that's a great thing. You all are the actual, if you all see, you all are the pulse of the people's initial understanding of the server. Because of you all, they feel the comfortability to enter the server thinking that the management will be giving them good help and a nice warm feeling to be part of the community. So that's a great thing by you guys. Lokesh, Thank you you. can go ahead. Hello, Tau. Hello, everyone. I am playing RP from last 7 years, and I am working with Tau from last 5 years. Right now in Prodigy India, my role is as an admin. In starting days, I joined for business side and crim side, and right now I'm taking care of business side, helping Mariam and real estate, and in crim side, I'm playing as a Charlie character to help some people in RP and real estate time. As an admin, I take care of EMS department, who look with general gaming. That's it for myself. Thank you, Lokesh. But guys, Lokesh is not working for me. He's helping us for last 5 years. Remember that, and you guys know it very well. In 3.8 and everywhere, how Lokesh has helped people in role playing for them to carry on their stories, get content and entertainment as a creators. So he's been helping us for a long time, and still been helping us, and it's an appreciated job. And all this community has seen it and they know about it. So thank you, Lokesh. Yeah, Loki, you can continue. Hello, hello. Can you? Sorry, I was stuck in some other place. Um, yeah, a bit about myself. I've been associated with Tau for now last with Tau for last 3-4 years, I guess, since sometime during the end of SVRP days. Since then, I've not at all played any RP, but I've been involved in a lot of different things related to RP in NoPixel and in Prodigy now. Uh, I do a lot of things in background. Uh, some of them related to finances and some other checks in the background work. So yeah, I don't play RP. I have only made a character, I guess, in both the servers in Prodigy and in NoPixel, but I've not stepped into city in long time. So yeah. Anyway, guys, his job, he's a CEO of the company. He only looks after the company's back end things and all the agreements and all those things. So वो normally आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, but he does most of the things of priority handling and all the major things which has to be done from Loki. He was a mod. Remember this, guy. Some people might know Loki was a mod of my own channel at the initial stages, and he's been always at the back end looking at things of all the things, and he's very appreciated for doing all those things. It's a very hard job which he's been doing for a long time. So thank you, Loki, for your help and all participation you have given for so many years. Yeah, sure. Jimmy, you can go ahead. Uh, so I am Jimmy, and I've been doing roleplay from past 5 to 6 years now, and
इतना टाइम से I was playing as a player and a content creator, but this time I got an opportunity to work as an admin as well. Uh, and also, I've been my work is to create content, and side by side, I take care of tickets now, solve problems, reports check करता हूँ मैं players के, and I solve it with the help of Ryoshi, Jungle, and Scar. अदर देन दैट, अगर सर्वर में किसी को भी कोई भी टाइप का कंटेंट क्रिएट करना होता है या किसी के भी कैरेक्टर को कुछ हेल्प चाहिए रहता है रिलेटेड टू कंटेंट, उनके स्टोरी लाइन पे, आई हेल्प देम विद देयर स्टोरी लाइन एंड या और तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे जितना अपॉर्चुनिटी मिला है इतने 6 साल में, आई फील लकी कि मेरे साइड की भी स्टोरी लोग लोग जानते हैं, एंड ताओ ने उस चीज़ को समझा, बेबो एंड जंगल ने समझा, एंड मुझे उतना लायक समझा कि मैं उन्हें हेल्प कर सकूँ साथ साथ में, एंड एक सर्वर प्रोडिजी को मैं अपना इनपुट दे सकूँ. Thank you, Jimmy. Thank you for your nice, beautiful words. So, guys, I am also thankful to the Jimmy's chat, because Jimmy के chat की वजह से आज Jimmy को हम लोग admin में डाल के ticket का चीजें दिखा रहे हैं, and he is also become serious to look after what is exactly the back side of the role playing, where you actually see every player clean through them what they are actually doing. So it's good, Jimmy. I hope you're enjoying that by learning all these things. And also your content, we can see that you are pushing a lot of content out, trying your best to do all those things. So yeah, thank you, Jimmy. Thank you. थैंक यू. Ming, you can go ahead. हाँ जी, तो सब लोग मुझे जानते ही होंगे. माई सेल्फ मिन, जो मतलब 24 घंटे तो नहीं रहता है चैट्स में एक्टिव, सबको रिप्लाई करता रहता है. बेसिकली करंटली अभी मैं प्रोडिजी इंडिया मैनेजमेंट में एज असिस्टेंट एडमिन टिकट्स देखता हूँ, डिस्कॉर्ड संभालता हूँ, एंड मोर टीवी में एज अ ब्रॉडकास्टर अभी मैं हेल्प कर रहा हूँ. सो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है. रैंडमली आई वॉज मतलब मैंने ज्वाइन किया था प्रोडिजी इंडिया बैक स्टार्टिंग में कि ताऊ सर लेके आ रहे हैं प्रोडिजी इंडिया. ऐसे ही रैंडम मैसेजेस पे मैंने रिप्लाई करना स्टार्ट किया. मतलब ऐसे ही मेरे को मन था कि हेल्प करूं मैं अपनी तरफ से कम्युनिटी को, या कैसे भी मैं कर पाऊं. तो ताऊ सर एंड लोकी भाई गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल थिंग्स डिस्कॉर्ड. सो या इन आरपी अभी बेसिकली मैं ज़्यादा मेजर आरपी नहीं करता, अभी डिस्कॉर्ड ओनली एंड मोर टीवी संभालता हूँ. Thank you, Ming. Thank you for every word what you have said here. But guys, let me tell you all, Ming was a very active person we saw in the during the Prodigy initial days, and we knew that he has a lot of capabilities and lot of talent which can be used for helping all the community, because he had a dedication which we could see, and he understood हमको कैसे, how we think about running a community. So he's been helping a lot for last 5 months, 6 months. He's doing lots. He's handling the whole Discord team for helping people on the initial time when they enter the server, the connection issues they have, and all those things. His whole team is so vibrant, which I told you all we could achieve 24 hours support for people. And plus, he's also part of More TV, which we launched like 2 months back, and he's been looking after most of the things there. And also he helps the ticket team, so he's everywhere. Mean has been, is through, I don't know how he's doing it, but he's doing everywhere. He's doing something na something, helping everyone. RP, yes, he has sacrificed his RP. He's not playing RP. He's doing more of the things which are outside, all those things. So thank you, Min, for all your hard work and things which you have done for Prodigy India and more production. Thank you. Nakul, you can go ahead. Hello everyone, my name is Nakul. Most of you probably don't know me directly, and that's because I don't usually do RP. My focus has been always on the backend things.
So on Prodigy side, I handle first of all is ban appeals. Like अगर लगता है कोई प्लेयर को कि एडमिन ने गलत ज़्यादा या फिर like कुछ अलग बैन दिया उसको, so the appeals come through me, and बाकी me and other management people we review it. फिर then there comes the logs अगर कुछ checking करनी हो, and then Frost already told about the bridge between the main devs and if there are any issues or kuch. Apart from this technical side में the quiz website जो भी आप दे रहे हो, it is all written by me, and other things like Discord bots. On more side, I have been in the BGN उसकी भी website I have done, and it was a great experience. Like I have learned a lot of things while being here. That's all, I guess. Thank you, Nakul. Thank you very much. Guys, if you all don't know, the whitelisting process of Prodigy India, which happens, the quiz test, has been designed by Nakul. It's one of the kind which we came up with, and it's designed really well. And a lot of other things he has done, web services of ours, BGN servers, everything. He's been looking after most of the technical side, everything. And yes, that's a great job, which people don't understand. There are some people who are doing a lot of things behind, which makes your things very simple. Imagine the whitelisting process was like old process. आप लोग इतना जल्दी whitelisted ही नहीं होते थे. The process has become so simplified that today we have reached to something like 4,000 people whitelisted, 4,500 people whitelisted in a span of 5 months. From fresh we had started. It's not from the old no pixel whitelisting we took. We have started from fresh and we have reached that much with a proper, at least a ratio of 60-40 players, a good 60 player whitelisted players, I mean, and a 40% which can learn from these people and become good whitelisting players. But that is another great achievement. Thank you, Nakul, for all your help which you have provided for the more production and Prodigy India. Thank you very much. Nishiche Gupta. Nishiche Gupta is a new guy, guys. He's just joined us. But come on, you can tell about yourself in last 3 days, whatever you joined. What is your experience? Yes, now myself, Nishchay Gupta. I am recently recruited as a helper in Prodigy. My main work is to provide Discord support alongside Lemonade and Mint. And in last 3 days, my experience is very good. I am learning new things with them. Yes. Thank you, Nishichej. And I hope you will become one of the great moderator, eventually grow yourself, get promoted to high authorities, and learn a lot of things in a role-playing atmosphere or community. Best of luck and welcome to the Prodigy India community staff side. Rishi, you can go ahead. Good evening, Tao. Good evening, everyone. I am Ryoshi. I joined as a moderator with Jimmy. Later got promoted as an admin in the Prodigy India management. I mainly look after the tickets that's related to the validations. My secondary work is to look after the gangs with Scar and Jungle Bike. Yeah, these are the things that I mostly look after, and that's it, Tao, I think. Thank you, Roishi. But you could have spoken more and told about yourself more if you wanted to. It was a great platform, but that's okay. That's great. And Roishi is a really hardworking guy, guys. He's also working a lot. Okay. And he's also an interested person. He likes the job, what he's doing. So, best of luck, Roishi, for future endurances of yours. Hope you will grow higher and higher. Thank you, Tao. Scar, you can go ahead. Yes. Good afternoon, everyone. I'm Scar. I joined as a moderator in the Prodigy staff team. Now I help and manage staff and Overwatch tickets when Jungle Boy is not around. And I mainly manage gangs and help in the racing scene with Eddie if required. Abhi, I don't RP much. I used to RP, and now I just come around and race here and there. Now I mostly work with the backend team and take care of things behind the scenes. Thank you. That's Thank all. you, Scar. Shaurya, you can go ahead. Yeah, hi everyone. My name is Shaurya Singh.
I've been working with Tao and the team for last 1 year, and I mainly work for more production, and I look after the RPCs as well as BGN tournaments. Talking about Prodigy side, I uh, help the team deal with the tickets as well as in-game support. Talking about RP, I don't role play much, but whatever I role play, that is as a private attorney. That's all from my side. Thank you, Shaurya. And guys, let me say, Shaurya is from No Pixel time, and he's been also learning and growing. And eventually, he looks after the RPCs a lot. He's the whole and like the in charge of looking at the RPCs. So Shaurya is the guy who actually has seen all the streamers how they are working these RPCs from small streamers. I mean, so he's been working on them, and now he's also looking at a BGN tournament. He's looking after. So he's also been independently holding these charges of our certain things जो different होते हैं, and he's doing a great job. He's doing a good job. He's doing a great job, and good, Shaurya. Keep it up. Thank you, Tao. Because we have a lot of future, we have a lot of vision into those products also, which you are looking actually because of the RPC. Tomorrow, those RPCs can become more production content creators. So that's a great job you are doing for creators actually. So best of luck. Thank you, Tao. It's Yeah. an honor. SRG. Hello everyone. Hello Tao. I'm SRG. I have been in the RP scene since 7 or 8 years. So अभी right now मैं more production associated हूँ as a spectator, जिसमें मैं आप सब लोगों को live events होते हैं जो major RPs होते हैं वो हम cover करते हैं, जैसे मैं और मिल के करते हैं. और इन RP Prodigy में मेरा character name राजमुक्का है, जिसमें मैं थोड़ा बहुत क्रिम करता हूँ, जिसमें भी active नहीं हूँ मैं. और बाकी हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे फीड दे सकें इवेंट्स की और पीओवीज अच्छे मिल सकें. तो अभी उसमें मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लास्ट 2 मंथ से. तो Thank इट्स you, बीन अ गुड SRG. टाइम. या Yeah. Continue. ना दैट्स इट आई एम डन. Yeah, so guys, SRG is the guy जो मोर टीवी में जब आप दिखते हो शाम को, वो जो अंदर की फीड आपको एक्सक्लूसिव फीड मिलती है, वो उसके हिसाब से मिलती है. How he works on it. So it's a great thing, guys. What they are doing, he, Ming, and also Swan is there. So they are handling this more TV, which is the initial stage. But I have a hope that this more TV will become big eventually, and we expect more people to join us to give the feeds where you can actually give more, POVs of the people inside who are role playing. So thank you, SRG, and thank you your whole team. Swan, you थैंक यू can सर. थैंक यू. go ahead. हेलो गाइस, गुड इवनिंग. मैं इनिशियली ज्वाइन किया था लाइक एज अ हेल्पर ड्यूरिंग एनपी डेज. फिर इवेंचुअली आई केम टू प्रोडिजी looking after like tickets and all, and involved in more production as well, different चीज़ों में. बाकी you guys might know my like character as future. बाकी तो that's it. See, Swan does lot of work, guys. He's shy to talk to you all. I think so. उसने बहुत काम किया है. Long time he's been working. He's working in every projects. He's also working with Nakul for our future projects. Okay, he's also doing that. Bebo क्यों नहीं है इधर? Why Bebo is not here? Who the वो last player? नाम चेंज But करके नीचे चली गई. आप नीचे गई है. Okay. I'm also thinking Bebo has not spoken. Okay. So Swan has done a lot of things which are very important. He's also looking at the future projects with Nakul, which you all will see after coming in 2-3 months. You all will be able to see that. Also, he's working and helping Frosty in the server to take care of a lot of things like creating, giving your businesses or giving your access to things in the server. वो भी कर रहा है Frosty के साथ. Plus, he looks after the more TV, and he also is an active admin, which is you guys he will be able to help. So yes, Son, thank you very much for your job, what you're doing. It's a great thing. Mariam? Yes, sir. Okay, so hi everyone. This is Mariam Mirza. Many of you know me as Mariam Mirza because मेरा in character name भी Mariam Mirza ही है. And this is gonna be my first podcast ever. Thank you so much for the opportunity, Tao. Okay, so I'm gonna segregate my duties one by one. First of all, I handle business, mainly business Discord and everything, and I work with Swan and Frosty on this.
like it's not like one person duties and stuff. So they help me with that sometimes when work is overflowing or something. And then I also look for the priority side with Zar and Days, and Swan also help me with that. और अभी मेरी जो मेन प्रायोरिटी है इट्स मोर टीवी मेनली आई हैंडल इवेंट्स विच इज़ गोना बी लाइक कंटेंट फॉर द फीड जो मिन हैंडल करता है एंड एसआर जे हैंडल करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देयर इज़ लाइक एनी बिग यू नो project or something like big RP such as auction हो गया या कुछ भी high step, we everyone of us like work together as a whole team. It's not like कि अगर एक एक के पास सब ड्यूटीज़ है करने को, तो अगर कुछ भी ऐसा आरपी होता है, कुछ भी होता है, वी वर्क टुगेदर फॉर यू गाइज एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड था. That's thank you, Mariam. Thank you very much, guys. Mariam के बारे में कुछ बताएगी. Mariam, actually, we saw Mariam in No Pixel 3.8. We saw her how she does RP, how she moves inside the city, how she makes friendship, how she are able to handle a lot of people's business and all those things. Mixing up and talking to people and trying to take responsibilities is the biggest trait of a admin. So उसको उसी टाइम पे देखा था, but it took time for us to get her on board. So finally on Prodigy we took her on board and she is doing a great job. वो बहुत काम कर रही है. जब भी मैं बोलता हूँ कुछ करने के लिए वो करती है. And she is available most of the time. And not only she is helping us, she is also helping a lot of role players to solve their problems. बहुत टाइम क्या होता है कि रोल प्लेयर्स का जो इश्यूज होते हैं वो मेरे पास ऊपर नहीं पहुंचते, वो उधर ही रहते हैं, नीचे ही और अंदर ही ये होते हैं. वो लोग नहीं तो लाइक उनको दिखता है कि कोई उनको देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं. So Mariam is the woman who normally is there inside the city whom they approach and she can get those things and tell us directly. And वो चीजें हम लोग जल्दी जल्दी उस पर काम कर सकते हैं, उस प्लेयर को हम जल्दी जल्दी रिलीफ दे सकते हैं. So she has been doing a lot of things because mostly admins server में अंदर ज्यादा नहीं जाते उतना, the main admin, so they are doing something else. But Mariam is doing overall everywhere in the city, out of the city, doing events, being everywhere. So great, Mariam. That's nice. What we thought about you, you are doing more higher than that, and I'm sure that you will be reaching into top positions of at least our community. That is, I think so, Mariam. Thank you so much, sir. Yes, Bebo, come on now. You Yeah. can go ahead. Hello everyone. Good evening. Tao in the chat. मेरा नाम बेबो है. As you do, बेबो गेमिंग करके चैनल था. I don't stream or play much right now. I'm currently working with more production and in between Prodigy India team as well. मेरा job बहुत ही flexible. I have to be very honest. कभी इधर कभी उधर. It is not exactly एकदम dedicated continuously. एक ही काम पे है. I used to earlier play in many servers. I met Tao in SVRP. Reason being I wanted to do something new and मेरे को lawyer RP करनी थी तब. And that time we met and then IRL stuff regarding politics and all. तो बात करके we got to know each other well. फिर NP में आ गए. फिर that time I started playing as a cop and I was started from cadet and it was like Tao who gave me the opportunity. Directly promoted me from officer to sergeant, trooper. Like for me it was like only first person who gave the women players so much high post or highlighted positions after seeing the efforts and all. After that same thing happened when it was in 4.0. I was given the opportunity to play as mayor, not just because viewership or something, just because if person has a knowledge and if he's ready to do the job and he's dedicated or not. And that's where I have what I liked about him. Then there is another part, not much of a, how can I say, jo thinking hai, that matters a lot for me. And reason I work over here is not for the community or not for the people, to be very honest. I work for myself. Reason being, there are very rare people in the life whom I cannot read or I cannot guess about them. So yeah, one of them is Tao. So I get to learn a lot from Tao himself, and I know it will help me in life. And working with him is like molding yourself.
कुछ मेरी problems है that have been changed from last 3 years. Trust me on this. And for my own growth, I think I see him as a mentor, and where you don't get to learn these things. IRL, if you have to, you need to pay for it. Okay, a lot. And over here, I don't have to, and he's ready to teach a lot of things, not just about servers and everything, but IRL experiences also. He has a lot more than that. That's why I work with him, no matter what project it is and what it is. So my job is like whatever he tells, what I get it updated and I work on it. And in the team, so or over here, it is like everyone in this VC is family for me. So I try to, balance it out, but very khud ki cheeze hai, I'm very strict sometimes, I know that, and I'm very rude at times as well. Reason being, I need things perfect, or at least few ethics needs to be followed. If someone crosses line, I'm very harsh. I get it, but still, I try to balance it out. Then I work closely with Frosty, Jungle, BRM, with everyone in over here except the moderator team. Then Loki Bhai, uh, Yoshi, Scar, Taos one, सबके साथ ही है. सबके everyone. It's not that because I do something alone. These people help me a lot, and कुछ भी हो जाए, go to them instantly, and they keep helping me and everything, and that's why it is possible for me to do so many things at a time. And yeah, current team, what I can see is that it's very good, and people have moved on, and they are giving their 10-12 hours for the community, which is very good part. No one gets paid over here, but yet people are ready to give their time for the community, which I appreciate and accept people. Thoda sa, I know people get frustrated and everything everywhere, but these people work a lot behind the scene. Each and every person, minimum time they give is 6 hours, no matter who it is. And Baki, RP, I don't get to play much. Reason being, there's not enough time. Yeah, about upcoming projects and everything, you'll get updated. And currently, I'll be focusing on more and more creators. And slowly, I'm, taking my role away from Prodigy India and completely focusing on Lore only. I think that's all. Thank you, Bebo. Thank you for your good words for me. That's nice to hear from you. But guys, let me tell you about Bebo, which she has not told y'all. See, dekho. Bebo, I knew from SVRP, whatever it is. Among the community, she had higher knowledge into IRL life. I noticed it that period of time. And she could understand things better than them. But it took time for her also, because this community is very toxic and this community is very demanding. So sometimes you need to go from your fundamentals and change and bow down to things. But now Bebo has been, मैं क्या करता हूँ जनता उसको, I don't tell her what she's next. I know her capabilities. So what I do, whenever a new project comes, I remove her from existing project and I put her in that project so that she gets the full experience of that project. Because she is the one who can take the experience and think that this experience can help her in somewhere else or anywhere else. Most of the people don't do that. Most of the people think that अच्छा इधर मेरे को काम दिया है, बर्डन है, मैं करेगा जाएगा, पर उन्हें समझ रहे कि उधर आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, उधर आपको एक नई चीज मिलता है जिसपे आप आपका और दिमाग डाल के और कुछ कर सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो. And Bebo does it. In last 1 year only, I'll tell, she was in more production where she was handling everybody. I think so. No Pixel के ending के time पे, that's November, December, and then she also handled a lot of more creators, RPCs, when they were playing in TLRP. So she was handling them that time, also doing their content and everything. And then she was moved to Prodigy India. And in Prodigy India, she again managed to create a good atmosphere of admins who can work together and all those things. So she really gave a lot of work, and it is only not management, guys. उसने जंगल के साथ मिलके एक पीढ़ी को, ऐसे पीढ़ी को क्रिएट किया जो एक फैंटेसी पीढ़ी है. Public can say anything, but I will tell you simple thing. This PD of Prodigy, there is no other PD ever had happened like that in role-playing servers in India, and there is no one like that. And also there is
no, I have not seen like this PD also in the main servers of NoPixel and Prodigy. It is something different created, and it is also created on my vision. मेरा विजन था ऐसे पीडी को क्रिएट करने का, जो पीडी अपने आप को समझता है कि सामने वाला क्रिएटर को उसको कितना गैप देना है, कितना मौका देना है, और कितना पेशेंस देना है. I myself will never able to do it. But yes, the servers to run really good, healthy role playing, the PD has to be the one which has to be defined properly in the server. Once the PD defines, everything else manages properly. वो चीज बेबो और जंगल ने अचीव किया है, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. उसमें जिमी भी है, जिमी ने भी हेल्प दिया है, पर जिमी को वो लोग ने मोटिवेट किया. दैट इज द मेजर पार्ट इन दैट. Jimmy was motivated to be coming back into PD, and Jimmy also could do this greatly because he started freshly, if you go to see, and सबके दिमाग में प्रॉपर्ली सेट हो गया नो पिक्सल के पीडी के कि कभी गन चलाना है, कभी काउंटर आरपी देना है, कितना सह सकते हैं, कितना नहीं सह सकते, वो सब वो लोग प्रॉपर्ली समझ गए. मोस्ट ऑफ आवर पीडी डजंट do it because of content. They always think about the content of the front guy first, and then they are the ones who will be part of it. That's how they work on things, and that's a great achievement. लोग माने ना माने, मैं तो बिग टाइम इसको मानता हूं, क्योंकि ये चीजों की वजह से हमारा बहुत लोड जो नो पिक्सल में हमको प्रॉब्लम करता था वो खत्म हो चुका है प्रोडिजी से. Everything has become beautiful. Besides that, Bebo has a lot of other things which she has done, which you all know very well. She's right now into more production back. She's gone back to more production. क्यों गया है? Because now she will be managing the creators who give you all a lot of क्या बोलते हो, content. Your favorite streamers such as Red Mafia, such as Emphy, as Arzival and Kyra, such as Daddy Cool and Margav, and the PD group, so Jimmy, AVG Gaming, new guys who are gone from RPC to more productions such as Candid, Katil Gaming. Then Asuna is Asuka is there. So all these people to manage together, that's another first time something she will be doing, and first time something in a community of ours will be done. That managing so many streamers and creating their content for them to get more viewership and more entertainment is another great project she's working on. And I'm sure she will be achieving this project also. We will give her all the help what she's required, and I hope all the community members also will support her in this project of hers. And this project will help other new RPCs to have a dream, at least to become more production content creator or more production family person. So great, Bebo, you have done fabulous job. So yes, nice. ADL, you can go ahead now. Yes, am I audible? Yes. Yeah. Hello everyone, this side ADL. So I am an ex Counter-Strike 1.6 community founder. Many of you guys should know mainly the old gamers of India who have started gaming a long back ago. So a few months back, I got an opportunity to work here. I thank Tao and the management team for trusting me and giving me this opportunity to help the community. So actually, I'm working here as a helper at Prodigy India. Basically, I am the first point of contact where players face an issue. So they like a lot of times people come with connection problems or with some errors. So or asking about the whitelist process. So that's where I step in. I guide them with the right steps and make sure that they that their problems are solved. And mainly my role is to listen to the players and make sure the issues don't go unanswered. So that's my duty here. Like I'm the a bridge between the players and the rest of the team. Very nice. Thank you, ADL. Thank you for your job. Guys, अभी सब लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है. कोई बाकी है तो बताओ. Anyone left? No. I guess Or- Ryoshi is left. Or Roishi is not. Roishi ne de diya. No, Roishi spoke. Yeah, it's Okay. done, it's done. Did it. Somebody who is not come today, whom we are missing, anyone like that? Sunny is not there, guys. Sunny को तो आप लोग पहचानते हैं. Sunny का भी बताता हूँ आप लोग को. Sunny is a great guy, but वो बमचागिरी करता है, पर अभी नहीं कर रहा है. Last, after they got a little bit higher dose from me, there is a shutdown, but वो करता है middle में.
and then it reflects back on the players, and the players complain afterwards that the admin has been doing these things. But otherwise, Sunny is a great help into the server. He looks after racing with Scar and Eddie. They have done great job. SK also has helped them initially and everything, but now SK is busy, so he's not there around. But otherwise, they have done great job in racing. Whatever again people say, I don't care. They have done a great job, and they will do more races, more organized, real competitive racing into the server in coming days when the ping will be less. And I think they have got my vision, what I'm telling them, and they will do it really great for next 3-4 months. So yeah, Sunny is also a good role player who is giving great role playing right now, help in role playing indirectly towards T-Bone and Raka and all those people in police. That's a nice thing. He's doing many things like that. So yeah. और कोई बाकी है? Anyone else? अभी I जो think more team से एक दो जना भी आए नहीं है. हाँ So कौन नहीं है? Aditya is not there. Days is Aditya and Days is not there. Jolaji. Okay, and anyway, Aditya and Days, people know about them because they're from No Pixel. And Aditya and Days are a little bit now less working guys because IRL में उनको ज़्यादा काम है अभी. So they only look after the priority tickets. They look at the priority tickets, the gifts which has to be delivered to the priority tickets. They do those things. And vehicle selections of new gifts for the next coming month for priority. So they basically do those jobs right now. And whenever they will get time, they will be seen inside doing more jobs also. Yeah. So let's go to the second phase of ours, guys. That is very important phase where you guys will have to tell me about when I ask you that I will normally ask you all about your field, what you are doing in the server, and you can tell us about it, that how you face these issues and how what should players not do for y'all to have a better way of dealing with things. Okay, so let's start with this. So let's start with Aditya. Aditya or Azim, both of y'all work into EMS, right, guys? Yes, Tom. Yes, both of y'all are in a EMS and this and that. And also both of y'all are looking at the bugs which people report in the server. Okay, so can you guys tell me that आपके अभी server में EMS का what is the position? Which people are regularly around? I can see Archie a lot, that girl a lot. I can see her every time at night. Also, I can see her. But okay, how it is going and what are the future things which are coming in EMS? Like if there is another hospital coming, or there are more people coming, and what are the new things y'all as a EMS people also around y'all want to push inside the EMS side, and what y'all want to tell the players also, what y'all face because of their ignorant things what they do sometime. Go ahead, both of y'all can speak, Azim and Aditya. आदित्य आप बताओ क्योंकि मैं तो ईएमएस में बहुत कम आता हूँ बट आपको आगे के पता है क्या फ्यूचर प्लान है You talk about Azim Bucks. He's muted right यस now. यस ओके ओके Maybe busy. ओके तो बग्स रिपोर्ट ईएमएस का ये है कि जो बैन हंट है ये इन सिटी आदित्य वो ईएमएस के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे क्योंकि मैं अभी ज्यादातर ईएमएस में नहीं जाता हूँ और मैं सिर्फ बग्स रिपोर्ट और प्लेयर रिपोर्ट देता हूँ मतलब बैक एंड टीम में हो तो बग रिपोर्ट जिस तरीके से आती है तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं कि उनको एक्चुअली वो मैकेनिक्स नहीं पता है तो वो उसके लिए बग रिपोर्ट खोल देते हैं तो इस तरीके ये बग रिपोर्ट खोलने से अच्छा पहले अगर आप उसको एक्सप्लोर करोगे कि वो एक्चुअली है क्या तो वो बेटर होगा बट आप हर बार बहुत से टिकट्स ऐसे देखता हूँ मैं जिसमें सिर्फ उनको मैकेनिक्स नहीं पता है तो हम बस उनको एक्सप्लेन करते हैं कि मैकेनिक्स है तो फिर उनको क्लियर होता है बट आप इन सिटी उसको फिगर आउट करो तो बेटर होगा मेरे लिए Okay, that's एंड nice. Yeah, जी yeah, continue. और हाँ अगर आप बग रिपोर्ट्स ओपन कर रहे हो तो बग को सॉल्व करने के लिए या हमको पता करने के लिए वो एक्चुअली बग किस वजह से आ रहा है उसके लिए टाइम लगता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर कोई रिपोर्ट खोले तो वो आप लोग बहुत करते हो कि नहीं सर मतलब बार बार टिकट पे रिप्लाई करते हो बट उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक्चुअली बग को हमको टेस्ट करना पड़ता है कि एक्चुअली वो बग है या कि कोई और चीज है सिर्फ आपके साथ हो रहा है कि बाकी पर्सन के साथ भी हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है तो बस वो है इतनी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कर लिए बग रिपोर्ट के लिए That's nice, Azim. Guys, you'll understand about bug reports, right? The bug reports are normally, yes, Prodigy has a different type of mechanism. So उधर वो issue होता है कि आपको bug दिखता है पर थोड़ा patience करो, explore करो server को, लोगों से बात करो और पूछो, you might get an answer.
some are genuine bugs which you all tell us and which helps the main server to fix them. That is a great job you all are doing. Thank you for that. And besides that, as Aditya hai kya idhar to talk about the EMS thing? I think So Aditya is Aditya is busy. No, now traveling. he is traveling. Traveling. Okay, so now forget about that part of it. Then we can go to BRM. BRM police में है, so you know more about police things. So who are there in Yes, the police is BRM, Jimmy, Jungle, Bebo a little bit. Who else is part of PD side here? Priority. Who's हाँ जो भी इधर PD के पार्ट है ना जो भी मैनेजमेंट में PD के साइड देखते हैं वो लोग अभी whatever I'll ask you all can answer and you all can tell about your feedback on these things. So tell me one thing, guys. Are we wrong to say that the PD is a great PD, or are we just boasting about y'all? ये दिखावा है ऐसा ही कि पीडी आप लोगों की बहुत अच्छी पीडी है, बहुत पेशेंस पीडी है, लोगों को रोल प्लेइंग देती है, doesn't do W easily, as no much controversies by spoiling people's RP through metas or whatever it is and everything. Are we right to say as a community that is it the truth or are you all just showing it off in front marketing strategy आप लोगों की कि एक्चुअली आप लोगों का पीढ़ी वैसे ही चुतिया पीढ़ी है जैसे होती है पर आप आगे से थोड़ा ऐसा दिखा रहे हो कि पीढ़ी हमारी अच्छी है. Can you tell us about that? I can start with that, and I think BRM and बाकी लोग add on कर पाएंगे इस चीज पे. So first thing, जो इस अच्छी पीढ़ी की बात है जो हमने अचीव की थी, was about to have single character players, जो कि I don't think so most of the servers are even able to achieve it. And उस वे में अगर देखा जाए हमारे पास जो रेशियो है कॉप्स का, that is much higher than other आरपी सर्वर्स. अलॉन्ग विद दैट अभी तक जो हमारी पीडी वर्क कर रही थी इतने टाइम से, इट वाज गोइंग अ लिटिल बिट स्टेप. दे वर नॉट अलाउड मेनी ऑफ थिंग्स जो बाकी सर्वर्स पे अलाउड होती थी. वो अलग बात है, अभी रिसेंट में हमने अलाउ की है टू बैलेंस आउट द सिचुएशन. सो दे नो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्टार्ट. अगर हम उनको आज बोलेंगे कि आज रुक जाओ इस चीज पे, दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले हमारे टाइम्स पे. They are ready to listen to us. If we want to aggress some force, they are ready to aggress it. If we tell them to stop, they are ready to stop it. So in comparison to the previous service, how we handle it, they are much more, in a way, they listen to us and they are not getting upset. पहले they used to get upset, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था. मल्टीपल कंट्रोवर्सीज होती थी, रिवेंज सिचुएशंस रिक्रिएट होती थी पीडी एंड क्रिम्स के बीच में. Yes, anyone else? Jimmy and BRM or whatever other people? Yeah, hello. Yeah. Other than that, I agree with Jungle's point. Also, जब जितना मैंने कॉप आरपी किया है उसमें एक चीज हमेशा होती थी कि लोग इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स करते थे पीडी में, बट दैट इज द कंटेंट कंप्लीटली. ठीक है, बट देयर वर मेनी पीपल जो आउट ऑफ आरपी लेकर के जाके काफ़ी सारी चीज़ें बोलते थे और करते थे. ये पीढ़ी में मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं. एवरीबडी इज़ कंटेंट फोकस्ड एंड उनको पता है कि सारे लोगों के पास, किसी के पास आई हैव नॉट सीन कि किसी को कितना ईगो रहेगा किसी चीज़ को लेकर के कि वो लोग कोई चीज़ को होल्ड करके बाद में उस पर चार चीज़ बोले किसी को. तो ये पीढ़ी को लेकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम प्राउड कि ऐसी चीज़ हमने अचीव करी है कि आगे जाकर के किसी को पीढ़ी से प्रॉब्लम ना हो. अदर दैन दैट, जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोग के अंदर ये भी नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि मैं इसको सर क्यों बोलूँ, क्योंकि इसको पास्ट में मैं इसका सीनियर था, ऐसा भी होता था. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. सीनियर जूनियर सब एवरीबडी इज लाइक दे एक्ट एज अ कैरेक्टर एंड दे डोंट टेक इट सीरियसली, एंड दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट आरपीडी. Thank you, Jimmy. But there's a point raised by a community member, which I think so Jungle can explain to it properly and explain to them properly this point. Tire pop Yeah, thing yeah. is too much W from PD, but everything else is all good. Tire pop क्यों आया और कभी आया और Yeah. what are the progression for that tire pop to come? Please explain to the Yeah. people. I can explain it better. So, अभी initial, you would have seen कि 3 months से we would have been using spikes. ठीक है, spikes भी हम तब use करते थे जब recent में कोई व्हीकल स्विच होता था या आपका वो होता था
फेयरिंग होता था, बट होने क्या लगा कि नंबर ऑफ व्हीकल स्विचेस इंक्रीज होने लगे. सो वी इन द इनिशियली थॉट इट विल गेट रिड्यूस, some लोग समझेंगे एंड वी कैन बैलेंस आउट द थिंग, क्योंकि हम कोई नया रूल नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते, क्योंकि लोग अगर गाड़ी स्विच कर रहे हैं उसमें आरपी रुकेगी, ठीक है, मतलब अगर हम उस पे कोई रूल पुश करेंगे. सो वी थॉट कि इस पे कुछ प्लान ऑफ एक्शन आना चाहिए. तो हमने थोड़ा गौर किया, वेट किया, बट हुआ क्या, ये चीज इंक्रीज होने लगी, और यही सब चीजें शूट आउट में भी यूज होने लगा. एक सिचुएशन में क्रिम्स के साइड से मल्टीपल 10 से 15 व्हीकल्स यूज होने लगी, वही 10 से 15 व्हीकल्स शूटआउट्स में भी आने लगी. सो एक टाइम में वी थॉट कि लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ सर्वर रूल, लेट्स इंप्लीमेंट समथिंग न्यू, मेक पीपल एडजस्ट, एंड इफ थिंग्स गो बैक टू द राइट ट्रैक, सामने क्रिम्स वाले भी समझेंगे, वी विल रिवर्ट बैक द एसओपी. सो दैट वाज द मेन रीजन टायर पॉप की एसओपी आई. इट्स नॉट लाइक कि परमानेंट है गाइस, it is a temporary one. We want people, the opposite side, to understand, to change But certain mentality. what I think, right? What I think, according to my this is type up is a good progression for PD. Everybody has progression. The crimes had its own progression. PD should also progress themselves from the initial days till now. वैसा ही होता है एक role playing का server. So PD introducing a tire pop is a good thing, because end of it, they had an option to grow their progression by changing the vehicles and also go to shootout. The progression for police is from one thing to increase their SOPs. That's how a progression happens, increasing. They have not increased to the place where they will shoot someone after certain time. They have only increased on the action of the criminal. वो सब उसके एक्शन पे. अगर उसको गाड़ी बदलना नहीं है तो टायर पॉप नहीं होंगे. वो उसके एक्शन पे आप सिर्फ रिप्लाई करते हो. So I feel the tie pop is a great thing that allows the PD can also give role playing to other people, not continuously chasing one situation for hours and hours. No, it cannot happen. So the whole idea is it has its limitation. उसको वो limitation पे चलना है. So limitation for that tie pop is a great thing, and I think so that's the way it has to go. And eventually, as the crime guys increase their force, PD will increase their force, and that's how the server goes healthy into a progression state. That's a good this. I will say that's a great thing which has been introduced. Okay. Besides that, let me ask you all other things. BRM, BRM, tell me about your LSPD and people inside the LSPD, the value of their role playing, how they actually think about themselves as a police. Are they only thinking about more of competitive side of it कि हमको ये करना है, उसको जाके मारना है? वो are they trying to believe? Because मैंने क्या देखा है कि आपके पीढ़ी में आप लोगों के राइट नाउ बोथ रोल प्लेस अपने कैरेक्टर में फिट हुए. बोला तो वो लोग ने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर बनाया, जैसे कैंडिड होने दो, सम्राट होने दो. बोथ लोग अपने अपने कैरेक्टर्स को डिफरेंटली दिखा रहे, पोर्ट्रेट कर रहे, जैसे सनी होने दो, देन हमारा वो ऑन हाइप, एंड ऑल दिस आर डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आर कम इनटू द सिटी. इट्स नॉट लाइक अ प्लेन पीडी आ गया सब एक ही टाइप का जॉब कर, नहीं, इधर टैलेंट डाला हुआ है एक एक कैरेक्टर को ग्रो करने के लिए. So, do you find any difficulties to work with them because of their storylines or whatever it is? Or is it very great comfortability to talk to everyone and you two are enjoying to run the PD for, क्योंकि आप लोग सुबह 4 बजे भी लोगों के चेस पे होते हैं. So much time you are giving to the server. So I need to know about that. इनिशियल स्टेजेस पे हम उनके कैरेक्टर को समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहते वो, क्या नहीं हो रहा था, एंड वो कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं उनके कैरेक्टर को, कि उनको क्या चाहिए उस कैरेक्टर से. तो हम उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे थे सबको कि वो कैसे अपने कैरेक्टर को प्रोग्रेस कर रहे हैं, या क्या उनको पोर्ट्रे करना है सर्वर में या एज अ कंटेंट, वो हम चेक कर रहे थे. देन इनिशियली हम उनके साथ मतलब एक हमारा अंडरस्टैंडिंग बन गया कि वो कैसे अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड वो लोगों के साथ कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, वो हम सब चेक कर रहे थे. एंड हमको पता चला कि उनको उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं वो उस पर सेटल हो गए, जैसे तावड़े, फिर अपना जो हॉनाइप है, कैंडिड है, सम्राट है, वो लोग चेक कर रहे थे. भले ही थोड़ा थोड़ा वायलेशंस हो रहा था उनसे, बट वी सपोर्टेड देम कि वो अपने कैरेक्टर को ना छोड़े एंड कीप देयर कैरेक्टर इंटैक्ट. एंड बाकी लोगों का भी मेंटालिटी वैसे ही है कि बहुत सारे सिचुएशंस में हमारा मतलब वीसीबी हो जाता है, या मतलब हम चेस पे हम आइज़ नहीं रख पाते, बट हम ऐसे मतलब पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं कि जो भी सिचुएशन है हम उसको नेक्स्ट वाले सिचुएशन पे अच्छे करें, एंड विल ट्राई टू डू बेटर. अगर वो सिचुएशन पे कुछ गलती हुआ, उस गलती से सीख के हम आगे जाते हैं.
एंड हम ये बिलीव करते कि नेक्स्ट वाले सिचुएशन में हम अच्छे करेंगे, एज अ टीम हम पूरा 100% देंगे नेक्स्ट टाइम। तो हम डिस्कस भी करते हैं इन आरपी ये सब चीज़ें। See, the thing is, the great thing about the पीढ़ी, इधर की पीढ़ी का रेशियो ये नहीं है कि 1 वर्सेस 1। इधर का पीढ़ी बहुत टाइम पे हारती है, बहुत टाइम पे विजुअल्स जाते हैं, सब कुछ जाता है। पर वो लोग को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि पर्सनली लेने का जरूरत भी नहीं है एक रोल प्लेइंग में, क्योंकि रोल प्लेइंग में सिर्फ आपको रोल प्लेइंग करना है, सिचुएशन के हिसाब से चीजों को करना है, आपको चैट के हिसाब से नहीं करना है, उसको क्या फील हो रहा है वो नहीं देखना है। आपके कैरेक्टर ये नेचुरली ग्रोथ होता है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट पीढ़ी हियर। दे आर नॉट गेटिंग अपसेट, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू अ ट्राई हार्ड। एक दो सिचुएशन में होगा, पर मोस्टली दे डोंट डू दिस ट्राई हार्ड थिंग्स। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड और एक चीज मैं बताऊं, अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन द कैरेक्टर्स आर प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड पीडी, राइट, बहुत गलतियां होंगी उनसे, क्योंकि और लोग उनका कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, वो सिर्फ पीडी नहीं प्ले कर रहे, वो उनका कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। तो कैरेक्टर जब आप प्ले करते हो ना, आप बहुत गलतियां कर सकते हो, एसओपी एंड एवरीथिंग। बट जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो ना, तो आप पनिशमेंट को भी अपने कंटेंट को लाते हो। You will never do a drama if you get punished. You will use that same drama towards your character progressing. वो भी हम लोग ने अच्छी तरह से देखा है अभी, because we don't get any appeals of saying that मेरे को punish क्यों किया, मेरे को क्यों, उतना नहीं हो रहा है। It means people who are getting punished are taking as content in the server, and they are very less people, and there is no lot of players we have seen, उनको डिमोट भी किया तो वो इश्यू नहीं करते, उसको कंटेंट के हिसाब से खेलते। But I think it's high time, Bibo, that you all should take that Samrat back. वो यार रोज लेने उधर आए थे, बाहर खड़ा रहता है, कल पता है भी मुझे दिखा तो, था, रोज उधर रहता है सूट डाल के, दे रहा है टाइम, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो पता है आप मुझे। लोगों को अभी देना होता है उसको एक चांस, whatever WFS it में is. आके उसने लास्ट टाइम बात हुई थी, तभी लास्ट चांस दिया था। अभी बस अभी और थोड़ा सा उसको मैं एहसास दिला रही हूँ। हाँ नहीं, Sound- मिस्टेक होंगे, हाँ पर मिस्टेक तभी देखो वो सुधरेगा इवेंचुअली, बट यस उसको भी समझना पड़ेगा कि सामने वाले रोल प्ले को इफेक्ट नहीं करना है। पर छोटे छोटे चीजें अगर होती है इन इन लोगों से, जैसे वो भी होने दो, कौन है वो कैंडिडेट, हाँ वो उनके साथ होती है, और सामने वाला एक्चुअली ऐसे रूल को फ्लैग कर रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग डब्ल्यू लॉस समथिंग, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। यू शुड टेल दैट फ्रंट गाय, ओके हुआ, पर वो लोग रोल प्ले, आप भी रोल प्ले में हिसाब से लेके जाओ। But yes, they should reform themselves, because they should understand that every time they will be not saved from these things, because सामने वाला का रोल पे खराब हो सकता है, इसलिए इश्यू हो सकता है। But otherwise you all decide। But देखा है मैंने उसको, कल भी था वो बाहर उधर तब खड़ा। मैं बस वो अभी 2-3 दिन है ना, नेटवर्क का वॉइस इश्यूज हो रहा था, एंड जाने नहीं मिल रहा था, इसलिए वो पेंडिंग है, बट आज या कल में हो जाएगा उसका। Okay, then besides बट that there are not much, if you all have नहीं नहीं any नहीं, sneak peek to give us। हाँ था वो पीडी का, आपने जो उनको सवाल पूछा था ना पीआरएम का, उसका क्लेरिफिकेशन आई वांटेड हाँ, टू दे गिव। दो दे दो। So the thing is कि about current PD and everything, we are not boasting about it कि अच्छी PD, we had a vision what we wanted from our previous experiences. तो वो चीजों पे we started working everything. That was कि सबसे पहले तो कैरेक्टर, आई नेवर वांटेड कि जब गैंग आरपी चालू होगी तो लोग बस कैरेक्टर स्विच करके पीडी कैरेक्टर से दुश्मनी निकाले। सो फ्रॉम दैट वो अभी के लिए वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन था कि सो दैट वी कैन हैव एटलीस्ट 100 कॉप्स एज अ कॉप मेन्स। ओके, सो नाउ वी हैव अराउंड 83 कॉप ऑफिसर्स, 31 प्रोबी, 20 अराउंड स्टिल कैडेट्स, एंड many are still in the forms and everything. Okay, so 100 cop mains का vision था, वो complete हो गया हमारा। Then there was something from start, we started putting in their mind that see, जो भी हो, अगर शॉर्ट बन रहा है, वीडियो बन रहा है, इट इज फाइन, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आयर लास्ट 4 वाइप हो गए, कुछ है उस सर्वर का नहीं। सो पीपल हैव एक्सेप्टेड इट नाउ। एक बार वाइप के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इतना उस बात को लेके झगड़ा, कंप्लेंट्स, ये सब करने की जरूरत नहीं। नो पर्सन ओवर हियर इज कंप्लेनिंग अबाउट रैंक सिचुएशन का जो है। ऑलमोस्ट एवरीवन who was no matter what their channel sizes, they are focusing on their content and everything. Even due to certain people, now they know that even taking L is a content and they have started working on it. Shorts उनके सबसे ज्यादा जहाँ पे Fs होते हैं या L होते हैं, उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो people are changing their mentality धीरे 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 धीरे। Then there was another thing, that is no PD shooting first and everything. जस्ट टू ब्रिंग देम इन कैरेक्टर, उसके लिए बार बार ओसी मीटिंग्स करा के उनको समझाया गया वाई वाई वाई।
एकदम नहीं चेंज हुआ, बट धीरे धीरे there are certain people who needs to change, but they will also change as well. Another important thing, we have, like 3 batches, afternoon, evening, and any. And all batches have at least one, say, what do you say? They 15 cops. At least one situation can be responded fully. थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, बट दिस इज व्हाट समथिंग वी वांटेड टू अचीव, क्योंकि यूजुअली एनए बैच में लोग नहीं रहते थे, 10 कॉप कभी होते नहीं थे, पूरी सिचुएशन कभी होती नहीं थी, तो एनए बैच के लोग बहुत मरते थे, कोई भी सर्वर रहने दो क्रिम साइड से, तो कभी रात के कॉप्स मिले नहीं. बट नाउ वी हैव पीपल हु नो, जिनके यश राव वगैरह इनके गाइडेंस के अंडर दे आर वर्किंग वेल. Another thing what we wanted to achieve was every character's uniqueness. Everyone is trying their best. कुछ लोगों का हाईलाइट हो गया है, बट ईच एंड एवरी पर्सन था पहले से स्टार्ट ऑफ द डे टिल नाउ उन्होंने अपने ट्रेड्स को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे नोटिसेबल है कुछ लोगों का नहीं है अभी भी, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. इसका रीजन क्यों है? क्योंकि वो दे डू आस्क अबाउट इट, दे डू टॉक अबाउट इट विथ मी, एंड सो आई नो दैट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द मैकेनिज्म. पीडी कैन नॉट बी लूटेड. सारे लोग खुश है फिर. That is the major ingredient which is helping the toxicity levels to be kept proper, Yeah. इशू कहाँ होता था, मैं पहले से ही सोचता था इस चीज को कि इशू वहां होता था कि till nobody puts hand in my pocket everything goes well. As soon as somebody puts hand in my pocket, मैं डायरेक्टली रोल प्लेयर से अभी रियल लाइफ में पहुंच चुका हूँ. मेरा ईगो इतना हर्ट हो चुका है कि fucking इसने मेरे जेब में हाथ कैसे ही डाला. Yeah. So that is a great thing which has happened. That's one good thing. Anyway, guys, y'all are doing great. And now I want to just ask for a few minutes is about the DOC. आप लोग कुछ DOC के बारे में बता सकते हैं हमको? क्या चल रहा है? What is the thing? Everything? That is completely BRM in jungle. Yes, whoever. हाँ, मैं बताता हूँ तो सो डीओसी की वी हैव क्रिएटेड अ टोटल न्यू सेपरेट टीम, ठीक है. एंड एक चीज बताता हूँ, जितने लोगों ने पीडी के अभी जैसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स देखे हैं ना डीओसी ऑफिसर्स के, दे हैव लिटरली अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स लेके आए हैं वो अपने सेकंड कैरेक्टर्स पे डीओसी के. सो यू विल बी सीइंग एक्टिव डीओसी मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक नाइट टाइम में तो रहेंगे ही रहेंगे, and in the afternoon times as well. So you will be at least seeing like 4 to 5 DOCs at most active at any time. एंड उनके साथ जो आरपी करने वाले हैं उन लोगों के लिए तो आप लोग को पता ही है बहुत सारी चीज़ें हैं. यू विल बी सीइंग देम थ्रू द मोर प्रोडक्शन चैनल या उनके स्पेसिफिक चैनल्स पे जो भी प्रिजनर आरपी कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट उन लोगों के लिए प्रिजनर फॉर्म हमने खोले थे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए whomsoever wanna try the DOC RP because it is one of a new kind. हर सर्वर पे नहीं मिलती. We have some new mechanics you have already seen through the trailers as well. And काफ़ी आई थिंक नाउ गैंग आरपी प्लेयर्स जो लोग हैं वो काफ़ी सारे अब रिक्वेस्ट आ रहे हैं. अर्लियर आई थिंक कि उन लोग को इंटरेस्ट नहीं था. कुछ नए आरपी हमारे लाइफर्स ने आई थिंक उनके अंदर इंटरेस्ट जगा एंड दे आल्सो वांट टू डू इट. सो वी आर गेटिंग मच लॉट ऑफ request about it as well. Okay, that's great. We'll try our best. But anyway, there are guards also. Eventually, people can do without even the role players. But जितना time हम कर सकेंगे with real role players, it will be great to show people a different perspective. अभी क्या है कि both chat and both things are new towards the server and they sometimes think कि उनके creators वो RP करेंगे तो content नहीं मिलता है, नहीं मिलता है. Because there's a fixed mindset of certain viewers कि हमको यही देखना है, हमको वो ही देखना है. So they sit on that. But guys, let's put it this way. Prodigy में वो चीजें differently है. हम वही दिखाने के लिए सोच नहीं रहे. हम लोग at least 10 stories 10 जगह पे run करना चाहते हैं simultaneously at the same time, so that you can choose what you want to watch. Like now, you want to watch DOC RP, then you have some streamers who are doing DOC RP. You can watch those people to understand what mechanics are there, what things they can do in role playing, what fun they can have with it. वो आप वो देख सकते हो. किसको दूसरा देखना है, गैंग का देखना है, वो भी है. वो भी streamers है, you can see. So this time in Prodigy there are a lot of streamers who are doing different things at different places. So that's a great achievement. That's nice. Yeah. So beside that, okay, DOC is done.
So I will speak about Acha. I wanted to ask another question. That is, are you all opening any slots for PD to join PD or anything like that? अब बताया ना 31 प्रोबेशनरी है और 20 कैडेट्स है और फॉर्म तो अभी पड़े हुए हैं So you all are already full and you all have to set up everything. Okay, so there is time for that. Okay, done. So next thing is we'll go to the racing side of the server. So Eddie, Scar, Hello. Sunny nahi hai idhar na. So can you Sunny all tell nahi us about what is the racing, where it is going, and what will be the plans in coming days? Hi, yeah. So racing is going pretty good right now, and so everyone is having fun. New car की जो भी list है ये people are exploring that. सारे नए mechanics, NOS, which has become cheaper in servers. Everyone is enjoying doing that. लोग tracks बना रहे हैं. So overall, it's going pretty good. अभी I think थोड़े से लोगों के ping issues और वो सब है, so we are waiting on that for tournaments. But we have many tournaments planned for this month and the future as well, and we have a lot of things in action and ongoing. So That's great. Yeah, Yeah. I would say कि most races, for this is also for people जो race करते हैं नहीं, वो लोग को interest है racing में, but वो लोग ने इतना किया नहीं है. तो I would say कि don't race ऐसा जीतने के mindset पे, just have fun, enjoy, खुद race करो, try out करो, and then do it. You don't have to always participate बस जीतने के लिए. You just have to have fun, enjoy, and explore. That's all. Yeah, it's important for the people also to know Prodigy. हम लोग दो टाइप के रेसिंग को फॉर्मेट को अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाइस. One is your role playing racing format, that is you can come race, make a host your race. उसमें आपको ग्राइंड कर सकते हैं रेस में सब कुछ, बट आप उसमें रोल प्लेइंग से रेस करेंगे. एंड वी आर आल्सो starting something called for racing teams, that is racing crews, that is competitive racing, जो हम लोग रोल प्लेइंग प्लस रियलिस्टिक रियल लाइफ की तरह से उसको करना चाहते हैं, जिसमें हमको वी डोंट वांट much role playing effects in it. We are making it like a season for 3 months, and we want the teams to behave like a team in that, so that they have races of all class, try to take points from every category of the race, every category class category race. So we are focusing on two sides, guys. So yeah, Eddie and Scar is doing a great job, but Scar is always busy with the admin now. Scar is the assistant admin as such, high admin assistant in charge of the admin side. So वो तो ज़्यादा admin का देखता है अभी. But Scar and Sunny, Eddie and Sunny are giving more time into that. अभी वो छोड़ो. There people have one question to you all. Why did SK was upset with you all? Can you all please tell about that? Yes. So what तभी वो जो incident हुआ था, that was a tournament, and तभी the main reason I think SK was upset was because of the entire NOS issue. So there was two teams which used NOS during the event. ठीक है, वो लोग ने खुद के उनके रेस क्रिप्टो इन्वेस्ट करके यूज करा. तभी रूल्स में उसका कुछ स्पेसिफाइड नहीं था. So it was a controversial thing तभी के टाइम पे, and since that was unfair for the people that didn't want to use NOS. So I think that was something which led to that entire drama happening. Okay, so the problem was Yeah. happened that you all didn't define a rule of NOS, and that became a controversial subject. But Yeah. how did you all plan? Did you all plan try to solve it? बात किया आप लोगों ने दूसरों से और उसको solve करने के लिए try किया है? Yeah, Yes. we tried to talk तभी ही वही जब हुआ था controversy, and even they wanted to talk, so we explained के okay, we'll look into it. We'll start next, ये जो अभी तभी का वो एक race हो गया था, तो next race से we'll look into it and define the terms और वो सब. But I guess तभी तक नहीं हुआ था वो situation ज़्यादा. They all it ended right there. पूरा controversy. Okay. Yep. Okay. But what you all have to say to SK if you all want to say something today? What you all want to tell him? Because he is also one of a great racer, what the community believes, and also a big part into racing scenarios of a role playing. But right now he's not racing. But would you all want to tell something through community to SK? I mean, yeah, so I can say, so Mera racing journey in RP started basically through SK only. He was the one that introduced me into this entire world of RP racing. So I will always cherish and, respect him being in RP. I'd obviously want him to come back into the racing scene. He's a huge asset, and he also has a huge interest in this. So I will say if he's there, if he has time, I'll always like it.
nice. SK, if you get this message, the message is like they're requesting you should come whenever you get time, be part of the racing because you are a great asset and gives a lot of people, a lot of racers learn from you. And yes, I think community also will love that. People jo chat mein to batao, what do you all think? SK should return back, right? He should be part of whenever he gets time. I mean, he's a married person now. But jab time milta hai, tabhi he should be. What do you all think? Let's see what the chat wants to say about it. Mm-hmm. Yeah, I think so. Most of the people want SK should come back. SK, I think so. The message for you is people are requesting you to come back in racing whenever you have time. Also, Scar, Eddie, and they are trying to tell that whatever happened previously should be, they can talk. Or they are sorry for what they have done. That there was a silly mistake what they did, which created all these things. And yeah, we should solve this and enjoy. Forget about those and go ahead. Yeah, I mean, we'd So. love to have him back. Yep. Mm-hmm. Okay, chalo. Now next we'll go to Datta, DOJ. How are things with you, Datta? What's happening? Now things are going slow. Reason because we don't have much candidates for the DOJ, to be honest. Mm-hmm. Things which we have basically what is on the roadmap for the DOJ from the DOJ side is basically we have the upcoming introduction of the political parties for hosting all the elections across the cities. So DOJ is mainly been mostly been on the active front being handled by Heba, who's I'm also her judge. She's also a judge where she has been presiding over a lot of cases. As we have a new target up ahead for handling the political parties and all those things, so we are temporarily suspending the bench trials for until some time. Once the finalization of legislatures for what is the basically what are the framework we are designing, how exactly things need to be planned out and everything. Once that thing is been done in effect, then very soon we'll be opening the bench trials, and most probably with the introduction of political parties, we expect there would be a lot of RP within the groups itself because, as you know, election requires funding and all those things, and there are criminal groups in the servers, and they are whitelisted people. So the conflict between them, the introduction of voting rallies and all those things, what we are hoping, let's hope, whatever we are hoping, we'll do that. And considering the past experiences which I had with the election, where people had been majorly exploiting the loopholes, all those things, the ruckus creating, rule break violation, and all those things getting happened. So we'll see what is the best ways we can finalize, omitting out those loopholes so that there is clear discrepancies amongst everyone. तो ऐसा ना हो कि भाई कोई रूल का फायदा उठा के अनफेयर हो जाए किसी के लिए जो अच्छी रोल प्ले कर रहा है, अच्छा दिमाग लगा रहा है, उसके लिए कोई स्टैंड ना हो और फिर बाद में ऐसा हो जाए कि भाई जिसके पास वो है बेसिकली मोर नंबर या जिसके पास अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिले, दैट इज व्हाट वी आर आल्सो प्लानिंग. तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे अभी ये चीज़ चल रहा है. I have been seeing there are a couple of bench trials happening server पे. There are few DAs, एक दो DAs के भी recruitment हुए हैं, which I feel like that will boost up some cases in around जो bench trial के cases होते हैं जिसमें लोग आए एक नई RP explore करें. That has also been in effect now in the server, and things are slow. I'm not gonna lie, things are slow in comparison to PD or other departments, but we also feel like the possibilities of the things which DOJ has to offer for benefiting the everyone across the city, whether be it elections, whether be it anything, that holds a major importance. So we are planning how we can uplift that so that more role play can be enhanced in the server. Thank you, Datta. Thank you for your feedback. But I also think, see what happens now, Datta, it's not a mistake of DOJ as such. The problem with the role-playing atmosphere right now and the server mechanics and the crowd who plays, they have got lot of other things to do in the server. Like it's not like before, at least Prodigy. There are so many server mechanics and things to do in the server. No, the time becomes very big essence for everyone because there's a XP related to it, or there is a table which is related to that. So a lot of people, what they do is like previously they used to indulge into DOJ. It means a criminal jata tha, bolta tha, judge mangta hai, ye mangta hai, wo everything they used to do.
And now those things don't happen because they don't want to go and waste a lot of time into DOJ and do that RP and everything and all those, because they want to go take the punishment quickly, leave the jail, go and do something and increase their progression. So वो चीजें हो रही है. I noticed it last 4 months. But yes, elections and all these are part of a content. Very important for a role playing server, but people should focus on it. Now, a lot of role players are there who are doing civilian business. They should not think that they will reach to IQ or whatever, sorry, HQ so fast. It will take a lot of time. So उसके लिए वो लोग ने ये जो आरपीस हो रही है ना उसमें पार्टिसिपेट करना मांगता है. And they should be, taking care, like being part of contesting election and all those things they should. And even this HQ people should not just run behind HQ. Just because your point is increasing or point is उस पे इतना focus मत करो, पर you also don't forget you have to role play with other civilians in the city. You have to do other things. So आप लोग भी election process में participate करो. You all, everything in future might be related for you all also. Whoever will become a mayor or whatever it is, they might be doing some things which will also affect your own progressions and everything. So I think everybody should take an interest in it and do this. And yes, Heba is doing a great job. She was not there in the middle. She was LOA, I think. So yeah, we require more people who are intellectual people who want to be part of DOJ. Hopefully more people join, and let's see what happens. Thank you, Datta. Thank you. Beside that, Frosty, you want to say anything about DOJ? Anything? Nothing much. I think Heba, once she got the responsibility, she took it very well, and she was very active enough. Recently, she's little bit on leave, and I think Datta joining the department, they both can handle it well. We have a lot of good lawyers, private lawyers. There are like couple of lawyers who are regularly putting writ petitions. They're very good in that, and they're very also active. They are not only just coming to court; they're just doing, they're progressing their civilian character as well in city, and they're also helpful to the others. I think, yeah, I mean, I think after this election things goes away, we'll have a active court where Datta and Heba can take place all the trial. Okay, that's great. That's great. Okay, now we'll go into which other department or anything in the city we have to. Business side. Mariam, Lokesh is here, right? Lokesh to ज़्यादा नहीं होता है. He's very less on the Yes, things. sir. But anyway, Mariam, you know how the events and the businesses normally are functioning in the city. How are the things happening? What do you think should be changed? Whatever you can talk about that. Uh, from me, like events जब होते हैं, like people should participate in it rather than the regular grinding. They just focus on that even on the event day. Although it's been like announced like 2 to 3 days back, still people don't show interest in it unless it's a race or something. They just do that only. जो normal events होते हैं like opening event हो गया या कुछ भी ending event ceremony है, they don't participate. I think they should focus on that too, because RP is all about communication and social stuff, everything. It's not just grinding and money. Apart from that, from business side, I don't face any issues, but there is like mindset amongst the people. They like, if we give them the business, so we have like two parties, we give both the parties business or some kind of to create content out of it. So they'll think, one party will always be like कि उसको ज़्यादा मिला, मेरे को ज़्यादा नहीं मिला. But in reality, it's like the same thing. It's just that they are unable to produce content out of it, या फिर उनका वो produce नहीं हो पा रहा उस business से, तो it's just their thing. So they try to put this thing on us as well. And from the priority side, people when call me for the gift to claim the gift, they don't know how to talk, like they will go rather overthinking. So this is the problem I face from them. Although I roast them on the spot or वो correct हो जाता है उनका चीज़, but it's it has happened many times to me. Okay, that's great, Apart Mariam. Yeah, continue. apart from that, there is the thing actually though. ओके. सो Yeah. एक बताओ मरियम हमको कि जब अभी बिजनेसेस व्हाट डू आपको क्या दिखता है कि अभी जो हम लोग ने पेमेंट स्लिप इंट्रोड्यूस किए, नाउ दे आर गेटिंग गुड मनी पेड आल्सो, बस जस्ट वेटिंग देयर, और आपका पहले का भी एक्सपीरियंस है नो पिक्सल का बिजनेसेस में, Yes though. व्हाट डू यू थिंक और कैसे और रिफॉर्म कर सकते हैं और चीजों को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? तो पे स्लिप से बिजनेसेस एक्टिव तो हो गए, बट द प्रॉब्लम इस काउंटर के पीछे ज़्यादा लोग होते हैं और काउंटर के आगे कम लोग होते हैं जिनको आपने सर्व करना है.
तो इट्स लाइक कि सब लोग काउंटर के पीछे ही है, लाइक फ्रॉम हाँ, द पर एम्प्लॉयज। काउंटर के या सामने तो लोगों को आना पड़ेगा ना खरीदने के लिए। सो या आप बोल रहे हैं बट लोग द नहीं आ रही है प्रॉब्लम खरीदने के लिए? But the problem is that though, like अगर मैं वहाँ पे हूँ ना, like काउंटर के पीछे हूँ, तो most of the people are not there for the RP. They're just standing there for the pay slips and everything. Even if someone comes, they don't talk much. They be like, "What do you want to eat?" And then they serve it, and that's it. That's the whole हाँ, RP they get from there. So so why would they stay over there? that thing the Yeah, business owners should look into it because उनको जगह दिया exactly. है वो रोल प्ले को एक ये देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, एक कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी बनाने के लिए उधर, जो रोल प्ले को ये करेगी। जैसे बग शॉट पे होता है। How things are done Exactly. at bug shot and all this is a different level way. The others also should learn from that and do those things. Now we cannot teach everyone what to do. So they have to learn eventually how to do things. दे हैव टू मेरे हिसाब से क्रिएटर्स को डिसाइड कर सकता है इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए। अभी पहले उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था, अभी तो एवरीथिंग इज प्रॉफिट। सो ओनर्स शुड सिट टुगेदर विद देयर मैनेजर्स, बी एक्टिव एंड कुछ ना कुछ करना मांगता है, लाइक हाउ दे वर डूइंग बिफोर आल्सो द इवेंट्स और समथिंग। We should not push them as management every time to tell them to participate in themselves. And I hope they will be also part of this racing role play, where they will be sponsoring the racing teams for the competition, the MTech racing, what is happening, motorsport racing, which will happen. So, उनका आएगा बहुत चीजें, but let's see how it goes. There are still a lot of businesses which we have to give to people to run in the server. पर बिजनेसेस ज्यादा है, लोग कम है रोल प्लेइंग के लिए, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट इवेंचुअली आई थिंक इट विल हैपन वेल। गुड रोल प्लेयर्स विल पुश देमसेल्फ। बिसाइड दैट मरियम, हमको बताओ आपके इवेंट टीम्स में, यू हैव अ गुड इवेंट टीम, हाउ यू आर पुशिंग योर इवेंट्स इनटू द सिटी? आपका मोर टीवी का पॉडकास्ट भी चलते हैं शहर में। तो वो एक बार हुआ था, फिर मैंने लाइक आई ट्राइड टू होस्ट इट, बट वो गैंग आरपी से रिलेटेड हाइस्ट एंड ऑल, तो पीपल वर बिजी ओवर देयर, तो इट वाज कैंसल्ड एट द लास्ट मोमेंट। सो अभी तो ऐसे कुछ है नहीं उस साइड से। बाकी इवेंट्स, देयर इज गोना बी इवेंट एट द वीकेंड्स, रेसिंग इवेंट होएगा वो। आई एम वर्किंग ऑन दैट फॉर नाउ। अभी दैट्स पहला मेरा टीम था लाइक जो ओओसी टीम ज़्यादा थी, बट अभी मैंने क्या करा, लाइक ऑब्वियसली विद योर परमिशन, ज़्यादा टीम मेरी इन आरपी है, बिकॉज आई नीडेड लाइक रोल प्लेयर्स प्रॉपर ना फॉर द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग विद इन द सिटी। इवन दो वी डू मार्केटिंग लाइक ऑन डिस्कॉर्ड या इन गेम कैलेंडर भी अपडेट होता है, पीपल डोंट पे मच इंटरेस्ट टू दैट, सो वी हैव टू डू लाइक द posters on the walls and everything. For that I needed in game marketing team, which I have, like I took दैट्स the वेरी interviews गुड। and I hired them. Yes. बेस्ट, जब इन गेम मार्केटिंग टीम होता है तो आपको रोल प्लेइंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अंदर वो Yes. होते हैं शहर में, दे आर रेगुलर पीपल हु कम इन द सिटी। Great, great. Best of luck for your future things. Plan whatever you are. Sky is the limit. Whatever you need to do, you ask help from the higher this and do it. And allow the people to get more and more content and more entertainment to show their viewers or whatever. Thank you, Mariam. So Yes. most of the things we have covered up, I think. And beside that, Ming, can you tell us about your side, because that's very important for new players. Ming and his team, tell us, आप लोग क्या क्या face करते हो उधर, and what can be the quick solutions which y'all can tell today people can adapt for those problems. Please, Ming, go ahead. Ming का आवाज आ रहा है आप लोगों को? नहीं, No, that was नहीं आ अब रहा। आ रहा है। अभी आ रहा है। Yes, you are audible. Yeah, yeah. बेसिकली ताऊ, जैसे कोई भी नया प्लेयर आता है डिस्कॉर्ड पे या पुराना प्लेयर है, तो Mhm. लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, अनाउंसमेंट्स नहीं पढ़ते कि क्या चल रहा है सर्वर पे क्या नहीं, डायरेक्टली उनको ज्वाइन करना है। तो बेसिक थिंग है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबको कि अनाउंसमेंट्स पढ़ो जो आती हैं सर्वर पे, या तुम्हें कोई परेशानी आ रही, कनेक्शन इशू, जस्ट स्क्रॉल अप, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, क्या पता किसी और को सेम इशू हुआ हो, सॉल्यूशन दिया गया हो चैट में ही, ताकि तुम उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। एंड मैनी ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी पिन्ड हैं मैसेजेस में डिस्कॉर्ड पे, वो सारी चीज़ें देख सकते हो आप लोग। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू, मतलब हेल्प करने के लिए आप लोगों के लिए। एक चीज को पूछना था आप लोग, व्हाट इज द सॉल्यूशंस यू ऑल कैन गिव राइट नाउ, टेल अस दैट अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है, ओके, आपको वो कनेक्टिंग इश्यूज आते हैं जहां आपको सजेस्ट करना पड़ेगा एग्जिट लैग, आप लोग वो कैसे बोल सकते हैं लोगों को, व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस इन दैट व्हेन पीपल हैव फेसिंग कनेक्टिंग इश्यूज इन अ नॉर्मल सिनेरियो, नॉट व्हेन दिस प्रॉब्लम्स ऑफ पिंग इज हैपनिंग और व्हाटएवर, इन नॉर्मल सिनेरियो जब एक किसी का हाउ हाउ मोस्ट केसेस आप लोग कैसे सॉल्व करते हो उसमें?
नॉर्मल सिचुएशंस था कि जैसे होता है ना कि एग्जिट लैग से ठीक हो जाता है। मोस्टली हमारे इंडिया में आईएसपीज की राउटिंग इतनी अच्छी नहीं है इंटरनेशनल सर्वर्स पे कि वो लोग अच्छी राउटिंग देते हैं। तो एग्जिट लैग से हो जाता है, या तो फिर हम क्लाउड फ्लेयर बोलते हैं कि ट्राई करने को, ताकि उनका कनेक्शन हो जाए उससे सर्वर से। ओके, और जो लोगों को टेक्सचर्स का इश्यूज होते हैं अंदर, वो नॉर्मली हाउ दे फिक्स इट क्विकली? टेक्सचर्स के लिए बेसिकली एक आधी कुछ सेटिंग्स है, जैसे एक्सटेंडेड टेक्सचर बजट को 50% तक रखना होता है, और अभी मोस्टली फिक्स डिप्लॉय हो गया है प्रोडिजी के डेव्स की तरफ से। वो अभी 5M के कैनरी वर्जन में है, तो अगर वो लोग कैनरी पे स्विच करते हैं 5M को, तो मोस्टली चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। जो वॉइड इश्यूज आ रहे हैं लोगों को या टेक्सचर्स लॉस हैं, तो उस वर्जन में वो सब कुछ फिक्स है। सो नॉर्मली न्यू प्लेयर्स और व्हाटएवर प्लेयर्स आर देयर, दे शुड, आई थिंक उनको ऐसा करना पड़ता है कि उनको अगर प्रोडिजी खेलना है तो उनको एक पहला तो री-इंस्टॉल करना है 5M क्लीन, पहला वो चीज। सेकंड थिंग, उसको उसके टेक्सचर्स को 50 के अबव रखना है, एडवांस टेक्सचर्स, राइट? एडवांस टेक्सचर जो होते हैं सेट, हाँ जी, या एक्सटेंडेड सेटर्स में, टेक्सचर बजट। एक्सटेंडेड टेक्सचर्स, ओके, उसको 50 के ऊपर रखना है। और थर्ड थिंग इज, आपको 5M में कैनरी वर्जन को ये करना है, यूज करना है। एंड दैट्स व्हेन विद अ स्टेबल कनेक्शन दे कैन डाउनलोड द टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग। और एक चीज मैंने देखा है कि न्यू प्लेयर्स को तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका तो लोडिंग, अगर कनेक्शन बहुत वीक है तो बहुत इश्यूज होते हैं, कनेक्शन फास्ट है तो बहुत टाइम जाएगा एनीवे टेक्सचर्स को लोड करने के लिए। बट आई थिंक व्हेन यू यूज कैनरी एंड एक्सटेंडेड टेक्सचर्स फर्स्ट ओनली, देन एवरीथिंग डाउनलोड्स वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट। वो एक चीज है। So yes, these are the major problems with the community faces. I've noticed it. A lot of people are asking about this issue only every time. Besides that, और कौन से प्रॉब्लम्स आप लोग को अलाउ लिस्टेड में फेस करने पड़ते हैं? बस यही है कि जब जैसे लोग पीपल टिकट ओपन करते हैं, तो वो चाहते हैं कि इंस्टेंट रिप्लाई आए हमारी टिकट्स पे। तो ऐसा नहीं होता कि हर टाइम मतलब हर कोई अवेलेबल होता है, सबकी अपने काम होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं। तो जब भी उनको टाइम मिलता है वो रिप्लाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वेट करो, जब तक आपकी टिकट ओपन है यू विल श्योरली गेट अ रिप्लाई ऑन द टिकट। सी नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन उसमें भी कि ज्यादातर लोगों का व्हाइट लिस्टेड ऑटोमेटिकली होता है टेस्ट देने के बाद। थोड़े लोगों का नहीं होता है, क्योंकि वो लोग पहले कनेक्टेड नहीं होते वेबसाइट पे, इसलिए उनको रोल नहीं मिलता है। सो देयर रोल गेट्स डिलेड। और मैक्सिमम मेरे को दिखता है एक 24 आवर्स में रोल मिलता ही है मोस्ट ऑफ द लोगों को। उनको पेशेंस रहना है, जिसको जल्दी मिलता है उसका लक है, जिसको बॉट बाद में देता है उसको मिलता है, जिसको नहीं मिलता है नॉर्मली वो प्रॉब्लम होता है। नकुल विल एबल टू टेल दैट Now, इज व्हेन दे, so या it is like if there are multiple users who have using 2 to 3 accounts, तो हाँ, बैकएंड पे their ID gets flagged, तो उनको डिस्कॉर्ड पे मिल जाता है रोल, बट वेबसाइट पे नहीं मिलता। वेबसाइट सो पे नहीं मिलता। तो आज ही मैंने आई हैव इम्प्लीमेंटेड अ पैच, दे विल बी ब्लॉक्ड ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, तो ना डिस्कॉर्ड पे मिलेगा रोल, ना नीदर ऑन द वेबसाइट। So normally players who are applying, new players, guys remember कि आप मल्टीपल अकाउंट से मत करो। आप एक स्ट्रीम टू आईडी और एक डिस्कॉर्ड, जो इधर ज्वाइन होता है और उधर ज्वाइन होता है, सेम रखो प्लीज। और मैंने और एक नोटिस किया है अबाउट द प्रायोरिटी। बहुत लोगों को प्रायोरिटी डिस्कॉर्ड पे मिलती है, पर उधर वो लोग रॉन्ग सीएफएक्स डालते हैं जब खरीदते हैं तभी, और उधर उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है वेबसाइट पे। सो देन दे ओपन टिकट टू गिव एंड ऑल दिस थिंग्स। गाइस आई विल बी वेरी स्ट्रेट टू ऑल, आप टीबैक्स पे जाते हो जब प्रायोरिटी खरीदने के लिए, तो आप सीएफएक्स को प्रॉपर्ली चेक करो। वही सीएफएक्स से आपको प्रोडिजी इंडिया वेबसाइट पे होना मांगता है। दो डिफरेंट नहीं हो सकते। वही सेम स्ट्रीम, सेम डिस्कॉर्ड, ये सब जगह पे मैच सेम होना मांगता है, डिफरेंट नहीं हो सकते। We help people right now, but eventually we might not help people because this is becoming a common problem sometime. So इसलिए थोड़ा प्लीज टेक केयर गाइस। whoever is प्रायोरिटी जब खरीदते हो तो प्लीज सीएफएक्स को सेम यूज करो, डिस्कॉर्ड सेम करो, स्टीम सेम करो। जो भी व्हाइट लिस्टेड हो रहे फ्रॉम द क्विज, प्लीज सी दैट योर डिस्कॉर्ड एंड द स्टीम टू आईडी इज द सेम ऑन द वेबसाइट। ये दोनों को वही यूज करो। डू नॉट ट्राई टू यूज मोर आईडीज टू जस्ट पास द एग्जाम। यू विल नॉट पास, यू विल बी फ्लैग्ड एंड बैंड। ये केयर ले लो। उसके बाद कुछ मीन और कुछ प्रॉब्लम्स आपके उधर आते हैं? एनी अदर टाइप ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स यू हैव टू आंसर टू पीपल? कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक कहता हूँ कि जैसे कभी कभी क्यू स्टक हो जाता है लोगों का, कि लोडिंग ओके, स्क्रीन पे रह जाता है, तो लिंक है वो कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली
एएल सपोर्ट में पिंड है। जैसे अगर बाय चांस हम डायरेक्टली 5M ओपन करके कनेक्ट करते हैं तो उसको टाइम लगता है प्योर मोड में ओपन होने के लिए, लेकिन अगर वही हम उस लिंक से डायरेक्टली ओपन करते हैं तो 5M डायरेक्टली ओपन होता है प्योर मोड में कनेक्शन के लिए। Okay, okay, और okay. Yeah. मोस्टली एरर्स के लिए सॉल्यूशन सामने ही लिखा होता है कि किस वजह से एरर आया है या क्या रीज़न है उसका। बस क्या है, प्लेयर्स को पढ़ना है उस चीज़ को और थोड़ा सा अपना यूज़ करना है माइंड कि क्या करना चाहिए हमें, तो आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से एरर्स वही सोल्व हो जाएंगे। Okay, that's nice. Thank you. Thank you, Mean. So now we'll go next topic, guys. Most of the things we have covered up. More production के RPCs के बारे में, Shaurya, do you want to tell anything? The new RPCs, what you are taking on board, what are the categories you are looking at, what you are, how you are selecting them. थोड़ा बता सकते हो? या तो डेफिनेटली तो मैं स्टार्ट करूँगा लास्ट टाइम से, जब हमने आई गेस 6 से 7 महीने पहले आरपीसी फॉर्म ओपन किए थे। तो अभी इतने टाइम में हमने जो नोटिस करा था वो ये था कि हम आरपीसीज़ के लिए आई मीन उन पे काम तो कर रहे थे, उनको मोटिवेट भी कर रहे थे, उनके लिए जैसे कि तो अभी काफ़ी बार उनको बोलते थे कि आप नए-नए एपिसोड्स बनाओ, नए-नए आइडियाज़ उनको देते थे करने के लिए। बट अनलेस अंटिल आप खुद से सीरियस नहीं हो, आप खुद से लाइक बीइंग अ स्ट्रीमर, आपको बस एक लाइक फन के लिए स्ट्रीमिंग नहीं होती है, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट। आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आप पे अभी जो नए आरपीसीज़ आए हैं, उनमें हमने जो रखा था क्राइटेरिया वो ऐसा था कि आपकी जो एक्टिव वॉचिंग है या फिर कांस्टेंट वॉचिंग जो आती है वो अराउंड 25 टू 30 होनी चाहिए। क्योंकि लाइक उतनी वॉचिंग है तभी हमें दिखता है कि आप एफर्ट डाल रहे हो, मतलब आपने कुछ करा है पहले भी ताकि हम वहाँ पे और काम कर पाएँ। अभी काफ़ी लोग होते हैं जो चैट से इंटरैक्ट ही नहीं करते, बस अपना स्ट्रीम ऑन करके और नॉर्मली रोल प्ले कर रहे होते हैं या जो भी गेम वो खेलते हैं वो कर रहे होते हैं। तो वैसे लोगों पे लाइक उनको अपॉर्च्युनिटी देके भी कुछ होता नहीं है। लाइक हमने काफ़ी बार अपॉर्च्युनिटी दी उनको बट वो उस पे काम नहीं करते थे। तो ऑल आई कैन से कि अगर आप मोर आरटीसी में आ रहे हो, आप ऑनबोर्ड हो रहे हो, नए लोग भी आ रहे हैं, तो यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट, ठीक है? जो भी हम लाइक आपको करने के लिए बोलें या फिर जो भी चीज़ें होती है एक लाइक एज़ अ स्ट्रीमर जिस पे आपको फ़ोकस करना चाहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट या फिर चैट्स एंगेजमेंट या फिर जो भी आप रोल प्ले कर रहे हो उसमें आप अब एक क्वालिटी रोल प्ले दो, या जो भी आप गेम खेल रहे हो उसमें आप ऐसा व्यूअर को ऐसा दिखाओ जिनमें उनको इंटरेस्ट आए। तो ये सब चीज़ आपको देखनी होती है, सिर्फ स्ट्रीमिंग ऑन करने से वो लाइक नहीं हो पाता। तो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द न्यू आरपीसीज, दैट्स ऑल। Okay, that's great. Thank you, Shaurya. Bibo, can you tell us about your more production? Bibo है क्या इधर? हाँ. Can you बताओ बताओ। tell us about more production जो आपका अभी family में जितने भी creators है, how are the things going there, and what you are expecting in future? अभी के लिए तो आई एम जस्ट नॉट वर्किंग एग्जैक्टली ऑन देयर कंटेंट एंड एवरीथिंग, सो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन मेंटालिटी एंड माइंडसेट ओनली, बिकॉज जब तक वो एक सेम लेवल पे नहीं आएंगे, दे डोंट गेट व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड हाउ थिंग्स गोना वर्क, तब तक तो कंटेंट से ज्यादा आई एम वर्किंग ऑन एटमॉस्फेयर ओनली, cause it is very difficult to, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ऑडियंस है, अलग अलग चीजें हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग मल्टीपल पीपल ओवर हियर, सो प्लस वी आर दे आर पुटिंग देयर ओन एफर्ट्स, दैट वीडियोस डालना, they are working on their content in a different perspective, and I can see that, and people are very excited about doing things in a different way and everything. It's not that they are expecting something, हाँ मुझे ये spawn दो वो spawn दो. I'm very happy that these people are more interested in help that is needed for the storyline and everything, but not materialistic help. Plus we are planning to have custom RPs and everything, but not currently. They have to balance it out, ongoing server progression and our own content as well. So in next 15 days, you'll get to see a lot of things. You can see that अभी जो है वो लोग वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? They have also few people who will be joining us as you know
मोर आरपीसीज, उनमें से कुछ लोग इनके भी वो उनको भी हेल्प करा रहे हैं to motivate others. That's all for now. Thought there is one more thing I want to say. Yeah, For please. the new upcoming RPCs and whoever who has applied for it and didn't get selected. So guys, basically जिन लोगों ने भी टिकट खोला था, हमारे लाइक उनका डेटा स्ट्रीमिंग चैनल सारा हमारे पास है अभी भी। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक आप जो हमने बताया अभी आपको क्राइटेरिया 25 to 30 व्यूअर्स, अभी आप उस पे काम करिए। और अगेन जब हम देखेंगे कि यू गाइस आर वर्किंग ऑन इट, यू गाइस आर गेनिंग दैट व्यूअरशिप, तो डेफिनेटली हम खुद से आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट? सो वो चीज़ें आपको खुद पे काम करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक जैसा कि ताऊ ने पहले भी मीटिंग्स में आप इसको बताया था कि लाइक स्ट्रीमिंग जब आप कर रहे हो तो लाइव स्ट्रीम, तो यूट्यूब कहीं न कहीं उसको उतना लाइक बूस्ट नहीं देता। तो यू नीड टू अपलोड शॉर्ट्स, यू नीड टू पुट स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम। तो आपको उस वे में फिर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअरशिप लेनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप आप एक-एक करके फॉलो करेगा तो डेफिनिटली लाइक अभी नहीं बट अगले जब फॉर्म फिर से ओपन होगा तो फिर से अप्लाई करते हो एंड आई होप कि उस बार आप डेफिनिटली सेलेक्ट हो जाओगे। या दैट्स ऑल। Thank you, guys. Thank you, everyone. We are coming to the end of the podcast. Actually, most of the topics we have been gone through. और किसी को कुछ बताना है, एनीथिंग फ्रॉम द स्टाफ हियर, कुछ बताना है, भूल गए कुछ बताने के लिए, तो आप बता सकते हो अभी। वो अदरवाइज विल फिनिश द पॉडकास्ट, गाइस। एनीवन? I'll just tell one thing. As a viewer, there is a huge responsibility, and it affects a lot of things. Perspective is, and you have to be very smart. Perspective can be created, illusions can be created. Use your own brain. Just don't go with the flow. And appreciate every role plays. Thank you for supporting all the people who have been supporting our community over here. And जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया है सबको, we are very grateful for that and hope you guys will be supporting ahead as well. Thank you, Bebo. Thank you to every one of you all, and thank you to the people. Let me wind up the whole podcast by telling some basic things which are very important for the community to know. जैसे लोगों के क्वेश्चंस थे अभी about exit lag and all this. Guys, exit lag is not the solution for everything. We are trying to find the best solution, that is the ping to be closer to the people who are playing. अगर वो चीज सॉल्व होंगी हमारे साथ तो बहुत चीजें सॉल्व हो सकती है. एवरीथिंग विल बी गुड. सर्वर प्लेइंग, feel to play on the server will be great and all this. But आप लोगों को पता है how we started our journey and what happened to us and everything. So there is nothing that we can guarantee it won't happen again to us if we do that. So we need to find the right solution for that and then take the risk of taking the decision of getting the server close to the players, the ping, very less ping. So उस पे हम लोग काम कर रहे हैं and eventually we will come with the solution and we will do it. That's how it will work. But thanks the community के लिए, both from the management and from all the more production and the Prodigy India with No Pixel India Private Limited company. I will thank all the community members and everyone who's been supporting us for a long time and who are proudly playing on our servers and enjoying a great role-playing experience. So we also welcome to all the creators who are there on the server and creating great content, giving entertainment for the people, and people are enjoying by watching this content. There can be a lot of bad things happening, which we will say sorry to those things, but we'll try our best to reform those things. There are some bad things which happens in the server. Those things also will be we'll try our best to be transparent to the community, to show them what exactly the decisions have been taken on different things. So thank you, guys. Thank you for coming and listening to the podcast. And tomorrow we will have a podcast with more production, I think so, right? We're having No, with more production. no. और वो दूसरे टीम राका भाई है ना, उनका. Tomorrow is Friday, right? Yeah. So tomorrow we are having, okay, guys, we will update. कल का podcast रात को 9 बजे होगा. उसमें I think so Raka, Kaiser and all these people are coming, but we will put the artwork of the whole podcast who is participating tomorrow. But it will be at 9 o'clock tomorrow, late night. So we'll have a great fun. We'll enjoy. So thank you, guys, to be present today for the podcast and listening everything. I hope you guys will enjoy. Love you all. Love you all. Thank you.